सो धन्वन्तरिच भगवान् भविकाय भूयात्। श्री धन्वन्तराय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Namaskar. Welcome. I would like to welcome all dignitaries on the dais on behalf of Independent Research Ethics Society. Thanks. We are grateful to you for your cooperation, guidance, and inspiration by which our journey has come today to 311th webinar within these 2 years. So I'm really grateful. Excellent guidance, excellent inspiration by which we are able to do it. Otherwise, it was not possible by me or anybody else in the world. I'm grateful to Vishnu Prasad Sharma ji, Agnihotri ji, Kamlesh Kumar Sharma ji, Jagdishwar ji, and my elder brother, Sri Madan Thangavelu sir, who is guiding me, who is inspiration to me for this journey, an infinite journey, endless journey. We don't know what number we will achieve in coming years. Definitely, it will be continued by next generation also after us, and we will be leaving our footsteps for prosperity of Ayurveda, for brainstorming of Ayurveda, and for easy communication on every topic. Every day, this will be remembered so long, and there will not be any need to remember this because this journey will be continued. Every day will be the celebration of Ayurveda with different topics, different experts. Thank you for to experts, moderators, guardians, everybody. I would like to hand over today's moderation to Professor Madan Thangavelu sir. Welcome sir. Sir is genome biologist from Cambridge University, but very much passionate about Ayurveda, Ayush, traditional medicines, and the logic behind every scientific region. Really, sir, welcome. Pawan ji, pranam. Pranams to all this presenters today. You have started very fascinating. Aaj hamare saath hai ji, 5 rajyon se. So we have from 5 states, we have people here today with us. And it is an expression of the depth of Ayurvedic understanding, different parts. Kamlesh ji, Rajasthan se, Agnihotri ji, Uttarakhand se, Ray UP se, so, and Poonam ji from Jammu, we have brought together this expression of a unity in that diversity. So we had one event on unity, and this is a true expression of how we can have that unity in that diversity. Alag-alag jagahon mein, the practices of Ayurveda have evolved separately. Kal hamare saath the Kerala se, और सिद्धा वाले है तमिलनाडु से, सबके पास वो सोच है कि हमारी परंपराओं में there is this natural understanding, natural knowledge of how to stay healthy. Yesterday's presentation was very special about Jyotish में understanding. हमारे साथ थे आलोक जी, शर्मा जी दिल्ली से, और उनके teacher Vineet Sharma ji, and the presentations were so rich and so wonderful. In one of the Vinod ji's talk, there was one comment about a comment he made, Shariram Vyadi Mandiram. And that is the first time I have heard those 3 shabd together. You know, it sounds so simple. 3 shabd ho mein, ek perspective. Or at the end of the talk, फिर हमने एक सवाल पूछा कि in an earlier talk we were saying
does rasa move the heart or does heart move the rasa? So this kind of connection that is there in Ayurvedic insights. What I found fascinating after all the wonderful presentations was the summary that was given by Agnihotri ji, our second speaker today. Agnihotri ji, he said, I object to that statement. Now that was it was wonderful because us time pe we said, oh, this is so amazing ki Professor Saab Delhi se ye kah raha ki the Shariram is Vyadhi Mandiram. I was curious ki kya hai Dr. Saab ki mind mein, Agnihotri ji ki man mein. Or Agnihotri ji ne ye kaha ki look at it slightly differently. Shariram is Swasthya Mandir. Now, both are correct, I think. And when we come from the two perspectives, then we see different ways of understanding the body. And here in the yahan pe, whenever I talk, Vishnu Priya ji, Namaskar ji, Vishnu Priya ji also has shared these sentiments in some of her talks. I hope at the end of today, we will get some more thoughts from Vishnu Priya ji. The point here is Ayurveda and our Ayush systems provides a wide spectrum to look at health. And if we take Adi Shankara's thinking about the Advaita Vedanta, it goes even more. It shows you the richness of the philosophical system from which we build up new knowledge. And many people outside India do not understand this, the depth of this philosophy, the systems of philosophy, darshana alag-alag tarah ka, or usme se how to extract applications. And all of our today's talk is about that. And I hope that we will see the different perspectives. Senior Kamlesh ji has a lot of experience, National Institute Ayurveda, Jaipur se, or Agnihotri ji studied in BHU as professor at Rishikul. And these are all places where I feel the seeds and the thinking for future health. Jo Modi ji keh raha ki one earth, one health, or Ayush world order. Kaise le aaye? How to bring this to the world? And I feel it is from these places, Jaipur, NIA now become a university, or Ayush University in Haryana, Ayush University in Uttarakhand. Our young students, the next generation, along with these wonderful teachers, I hope will lay the foundation for that vision of one earth, one health, and the Ayush world order. So with those few words, I thank all the people who have joined us today, and we look forward to your to learning from you and your vision and the discussions. The only comment I want to make, Pawan ji, ki you have clearly connected 5 states of India, richness from 5 states. How are we for time? We will complete kitne baje khatam karna hai ji, Pawan ji? नहीं, हर वक्ता के पास 20-20 मिनट आराम से हैं सर. अच्छा, 20 minutes for each speaker. चलो, तो आराम से हमें आशीर्वाद मिलेगा. क्योंकि सबसे पहले मैं आदरणीय कमलेश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं. आदरणीय कमलेश कुमार शर्मा जी, हमारे गार्जियन, वरिष्ठ और अग्रज और प्रो वाइस चांसलर, राजस्थान में वुमेन यूनिवर्सिटी के एक्स प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के, मैं क्या क्या कहूं उनके बारे में. सूर्य को दिया दिखाने का साहस मेरे में नहीं है. मैं अग्रज का स्वागत करता हूं, आदरणीय से आशीर्वाद चाहता हूं. मंच आपका है. जागृतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. आदरणीय मदन थंगवेलु जी, मित्रवर पवन जी, आज इस सारस्वत मंच से जुड़े हुए, जैसा संकेत किया अभी मदन जी ने, कि देश के 5 प्रांतों के विद्वान आज इस में वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं. श्रोता के रूप में भी बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं. अभी प्रारंभिक प्रस्तावना में भी और ये कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भी
कुछ सूत्र आदरणीय मदन जी ने हमारे सामने रखे हैं। उन सूत्रों के संदर्भ में ही आज आयुर्वेदिक कम्युनिटी को आयुष को सोचने, समझने और कुछ करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी पिछले दिनों की विपत्ति के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। तो एक तरह से अवसर उपलब्ध हुआ है, लेकिन उससे एक कदम और आगे बढ़ने की आज जरूरत है। आपदा में अवसर और अवसर को उपलब्धि में बदलना, ये सेकंड काम। आपदा में अवसर और अवसर से उपलब्धि। तो आज इस प्रकार की वैश्विक अनुकूलता और हमारी जिस पद्धति की ब्रांडिंग, स्वयं देश के प्रधानमंत्री जिसको सारा संसार सुनता है, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो कोई बात बोलते हैं तो लोग उसको गंभीरता के साथ सुनते हैं। और प्रधानमंत्री जी जितनी गंभीरता के साथ आयुष की एडवोकेसी करते हैं, उसी अनुपात में हम आयुष के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। अभी इन्होंने संकेत भी किया कि आज संसार के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या सारे संसार को आयुष एथिक्स पढ़ाने के लिए अगर देश भर से 100 प्रोफेसर्स की आवश्यकता पड़े यदि, तो हम कहां से लाएंगे। मैं आदरणीय मदन जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये हो सकता है कि उन 100 प्रोफेसर्स के लिए उन्होंने मन में क्या पैमाना सोच रखा होगा। हो सकता है उस पैमाने पर शायद खरे उतरने वाली संख्या कुछ कम हो, लेकिन एक प्रयास मदन जी ने अपने आदरणीय पवन जी ने जो 2 साल पहले प्रारंभ किया, इस प्रयास में से बहुत से लोग निकल कर आएंगे जिनको ये विजन भी मिल रही है। जब जब मदन जी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित स्थापित आवश्यकताओं के अनुरूप, अपेक्षाओं के अनुरूप कोई बात रखते हैं, तो हर आयुष का व्यक्ति सोचने को, कुछ करने को ये बाध्य होता है कि आज वैश्विक आवश्यकता क्या है और हमारा धरातल क्या है, हम अपने धरातल को कैसे वैश्विक स्थितियों के साथ कनेक्ट करें, ऐसी आज आवश्यकता है। और फिर जब हम आज वाले विषय के साथ भी जुड़ते हैं तो कुछ बातें हैं जो अनुषंगी हैं, जो उसके कॉन्टेक्स्ट में आती हैं, इन चीजों को भी देखने की जरूरत लगती है। जिस आयुर्वेदीय सद्वृत्त की बातें आज हम करने वाले हैं, मैं सोचता हूँ मेरे जो आगे आने वाले वक्ता, मैं उनके लिए छोड़ूंगा अधिकांश विषय। मैं कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी पेरिफेरी से हट करके भी हैं, उनको मुझे लगता है रेखांकित करने की आज आवश्यकता है। संहिताओं में जो लिखा है, सद्वृत्त के नाम से चरक संहिता के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में सद्वृत्त इटसेल्फ, ये उन्होंने कहा है, और उसके 2 प्रयोजन बताए उन्होंने कि इसमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति होगी। ये 2 प्रयोजन उन्होंने सद्वृत्त के बताए। लेकिन आचार्य का वैशिष्ट्य देखे, न केवल चरक का अपितु आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने जहां कहीं भी ऐसा प्रसंग आया सद्वृत्त के प्रकरण के अलावा भी उनको बात कहने के लगी कि हाँ इस समय हिट कर देना चाहिए, तो उन्होंने उसका संकेत किया और लोगों को आगाह किया, श्रोताओं को, पाठकों को इस बात के आगाह किया, उस प्रकरण में उस बात को कही। और चाहे शारीर स्थान हो, चाहे विमान स्थान हो, इंद्रिय स्थान हो, चिकित्सा स्थान या सिद्ध स्थान, कल्प स्थान हो, जहां पर भी ये बात है, उन्होंने इस बात को कहने से नहीं चूके। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, ये जब नरो हिताहार विहार से भी बात हम सब करते हैं, सद्वृत्त वाली बात मैं एक बार छोड़ करके, तो शारीर स्थान आता है तो भी वो कहते हैं। और ये जो बातें संहिताओं में कही गई, समानांतर रूप से तत्कालीन उसमें जो ज्ञान विज्ञान समानांतर रूप से समाज में विकसित हो रहे थे, उन सब पर भी उसका प्रभाव आया। उसका एक उदाहरण मैं आपको कहता हूं कि जब आचार्य चरक ये कहते हैं कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालये, सब कुछ छोड़कर शरीर की अनुपालना करिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले कह चुके कि आरोग्यम मूलम उत्तमम, आरोग्य इन सब बातों का जो पुरुषार्थ है, चारों इस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए आरोग्य आवश्यक है, और उस आरोग्य को प्राप्त करने का साधन श्रेष्ठ शरीर ही है। यही बात को जब शब्दांतर से किसी दूसरे प्रसंग में आचार्य महाकवि कालिदास भी कहते हैं। कुमार संभव में जब सती तपस्या कर रही होती है शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और स्वयं भगवान शिव उसकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए, उसकी दृढ़ता की, उसके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उसके पास एक ब्रह्मचारी का वेश लेकर जाते हैं, तब भी वो उसे पूछते हैं कि हे देवी, आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है, क्योंकि आप निरंतर कृश होती जा रही हैं और इस शरीर के माध्यम से आप अपनी तपश्चर्या को पूरा करेंगे। और इसलिए अंत में उस सूत्र में कहते हैं ये
कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कालिदास जी उस ब्रह्मचारी के मुख से कहलवाते हैं पार्वती जी को। तो समानांतर रूप से जो साहित्य चल रहा होता है उस धारा में भी है। तो एक उत्कृष्ट कोटि के महाकवि भी सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालेत जो चरक ने कहा, उसको कालिदास सर्वमन्यत परित्य शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, यानी सबसे पहला जो साधन वो शरीर है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, वो भी कहते हैं। और उसके ठीक उलट एकदम महाकवि उच्च स्तर के सरस्वती पुत्र, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जो गांव देहात में रहता है, वह भी जब कहता है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, ये उसी का रूपांतरण है। यानी आम आदमी में भी इस सिद्धांत की, इस दर्शन की पैठ बनी हुई है, जो उच्च स्तर तक के व्यक्तियों में पहुंची हुई है। तो कुल मिलाकर जब चरक का हम आद्योपांत अध्ययन करते हैं या किसी भी आयुर्वेदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो हमें लगता है कई बार ये चिकित्सा शास्त्र है या ये एक जीवन दर्शन है, या देखते देखते हमको लगता है ना कि धर्मशास्त्र भी है क्या, ये धर्मशास्त्र के अलावा ये नीति शास्त्र भी है क्या, ये तो नीति शास्त्र के अलावा क्या ये समाज शास्त्र भी और अर्थशास्त्र भी है क्या। ये जब चाणक्य एक तरफ कहते हैं विभिन्न प्रकार के उपक्रम आजीविका के लिए क्या हो सकते हैं, तभी हमें देखना पड़ता है कि दिनचर्या प्रकरण के अंतर्गत आपकी दैनंदिन क्रियाओं को करने के पश्चात आप अपने योगक्षेम के लिए क्या करें, ये ऐसा जब आचार्य संकेत करता है तो उन्होंने 4 जॉब्स बताए। आज संसार के सारे जॉब्स इन्हीं के इर्द गिर्द हैं। उन्होंने सबसे पहला बताया कृषि, दूसरा बताया पशुपाल्य, तीसरा वाणिज्य और चौथा राजोप सेवा। इनके इर्द गिर्द सारा संसार की इकोनॉमी आकर ठहरती है। तो या तो कृषि है, तो आप संसार भर में जितने आज उद्योग है, इंडस्ट्री है, उनमें से अधिसंख्य कृषि आधारित ही है। किसी भी प्रकार का उत्पाद हो, वो चाहे किसी हम रासायनिक क्षेत्र को यदि छोड़ दें तो सबसे पहला उन्होंने जीविका का उपार्जन का सबसे पहला साधन आचार्य चरक कृषि बताते हैं, उसके बाद पशुपालन बताते हैं, उसके बाद फिर वाणिज्य बताते हैं, और चौथा और अंतिम राजोप सेवा। दुर्योग से दुर्भाग्य से आज ये क्रम उलट गया, और राजोप सेवा भारत के संदर्भ में तो कम से कम गवर्नमेंट सर्विस का जो क्रेज आज बनते जा रहा है, वह जो अंतिम चॉइस होनी चाहिए थी, वह प्रथम चॉइस आज समाज की बन गई है। तो इस आधार पर जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो लगता है ये कि भले वो चिकित्सा शास्त्री रहे हों, भले वे एक जीवन विज्ञान के ज्ञाता रहे हों, लेकिन समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र का भी उनको उतना ही अध्ययन था, या यूं कहें कि समानांतर रूप से चलने वाले किसी भी समाज शास्त्री, नीति शास्त्री, अर्थशास्त्री के लिए भी बहुत से सूत्र आयुर्वेदिक और आयुष के ग्रंथों में हमको प्राप्त होते हैं। तो जिस सद्वृत्त का उल्लेख आचार्य चरक ने कंसोलिडेटेड एक स्थान पर किया, उसको भी यदि हम थोड़ा सा वर्गीकृत करके अगर देखने की कोशिश करें तो हम इसको कुछ भागों में समझने की दृष्टि से बांट सकते हैं। कुछ इस प्रकार के सद्वृत्त हैं। पहले तो सद्वृत्त क्या, मोटा मोटा हम बार बार समझते आए हैं कि सताम सज्जनानाम वृत्तम वर्तनम व्यवहार है। सज्जन व्यक्तियों का, एलिट क्लास के लोगों का जो वास्तविक व्यवहार है, वहां जो स्तुत्य है, जहां जहां वो स्थापित किया गया, जो मान्य है, जो व्यवहार में आएगा है, इस प्रकार का व्यवहार वह सद्वृत्त है। तो बहुत संक्षेप में इन्होंने कह दिया कि सज्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन लोग है, जो नीतिमान है, जो धार्मिक धर्मपरायण है, जो नीतिपरायण है, उन व्यक्तियों के द्वारा मान्य जिस किसी का भी जो व्यवहार है, वह व्यवहार सद्वृत्त के अंतर्गत आता है। तो संहिताओं में स्थान स्थान पर, चाहे वो चिकित्सा स्थान में आचार रसायन के रूप में आया हो, चाहे सिद्धि स्थान के अंतर्गत आया हो, या निदान स्थान के अंतर्गत, या शारीरिक स्थान के अंतर्गत कहा होगा हो, वो सब कुछ उन्होंने कंसोलिडेटेड करके, इकट्ठा करके सद्वृत्त इस रूप में कह दिया। उनको हम जब ठीक से अगर समझने के लिहाज से कुछ बांटना चाहेंगे तो उनमें से कुछ ऐसा है जो वैयक्तिक सद्वृत्त के अंतर्गत आता है, वो पर्सनल एथिक्स के नाते हम उसको मान सकते हैं। कुछ होता है सामाजिक सद्वृत्त, जो एक कम्युनिटी के नाते आवश्यक है। मैं एक समाज का अंग हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं एक परिवार का सदस्य हूं, परिवार का मुखिया हूं, मेरा परिवार किसी बड़े समाज का सदस्य है, और वह मेरा परिवार एक बड़े समाज के साथ जुड़कर वह मेरा समाज इस सृष्टि का अंग है, और ये पूरी सृष्टि एक परमेष्टि का अंग है। तो व्यष्टि से लेकर समष्टि से लेकर सृष्टि से लेकर परमेष्टि तक की बात करने का विचार हमारे आचार्य करते हैं। ये जो चतुस्तरीय व्यवस्था है, इस सब में उसका पार्ट और पार्शियल हूं मैं, और वहां मेरी भूमिका किस प्रकार की रहनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आता वैयक्तिक सद्वृत्त। तो उस वैयक्तिक सद्वृत्त के अंतर्गत भी उन्होंने कुछ बातें स्वास्थ्य से संबंधित कही, तो स्वास्थ्य के अंतर्गत भी कुछ शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें,
उनको उन्हें जो डूज एंड डोंट्स के नाते रखा, जो मेरे आने वाले वक्ता और डिटेल करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा केवल आउटलाइंस बनाकर छोड़ूंगा ताकि उसकी भी बाकी पूर्ति मेरे साथी कर सकें। उनमें कुछ मानसिक स्वास्थ्य सद्व्रत से संबंधित हैं, मन से संबंधित कुछ सद्व्रत हैं, ऐसे एथिक्स हैं, कुछ वाचिक वाणी से संबंधित एथिक्स हैं। ऐसा एक वर्गीकरण हम सद्व्रत के आधार पर कर सकते हैं। इस स्वास्थ्य संबंधी के अलावा कुछ भोजन संबंधी एथिक्स हैं जो स्थान स्थान पर बताए हुए भी सद्व्रत के अंतर्गत उन्होंने कहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी डूज एंड डोंट्स के अंतर्गत हिता इथिक्स के अंतर्गत कहीं हिताहित का विचार है, कहीं मात्रा का विचार है, कहीं अग्नि का विचार है, कहीं काल का विचार है, और अंतिम एक शब्द कह करके तो उन्होंने कह दिया है कि आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, कहीं कहीं दूसरे संदर्भ में, पर बात सद्व्रत के पर लागू होती है कि अब आप देखिए आत्मानम अपने आप को अभिसमीक्ष शब्द ये अपने आप में कहता है कि केवल एक तरफा नहीं, हर तरह से आप अपने आप की समीक्षा करके, मूल्यांकन करके, आलोकन करके, आप अपने आप को देख करके फिर आप आहार का सेवन करिए। तो आहार से संबंधित कुछ एथिक्स बातें बताई। भोजन संबंधी एथिक्स के अंतर्गत ही ये ध्यान में आता है कि आयुर्वेदिक आचार्यों ने एक क्रम बताया कि किस क्रम से हम आहार का सेवन करें, किस क्रम से आहार रस का सेवन करें ताकि वो ठीक प्रकार से पाचन हो और अंतिम रस के उत्पाद के रूप में शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो। किस प्रकार के पात्रों का उपयोग हो, पकाने का क्या क्रम हो, खाने का क्या क्रम हो, ये सब भोजन संबंधी एथिक्स इस अंदर उन्होंने बताया है। कुछ बताया है शौच संबंधी। अब शौच संबंधी हम देखें तो शौच शब्द को ठीक ठीक प्रकार से इंडिकेट करने वाला अंग्रेजी का कोई शब्द यदि है तो मुझे ध्यान में नहीं आता है वो, लेकिन उसमें शरीर शौच है, मनस शौच है, वाक शौच है, इन सब का उल्लेख आचार्यों ने किया। शरीर शुद्धि किस प्रकार से हो, मलायन शोधन का उन्होंने तत्संबंधी प्रकरण में तो उन्होंने कहा ही कहा, लेकिन सद्व्रत के अंतर्गत भी कहा उन्होंने कि किस प्रकार से शरीर का शोधन, शौच की प्रवृत्ति उसमें रहनी चाहिए। शौच से केवल मलायन शोधन नहीं है, यहाँ शरीर के हर प्रकार के शोधन की आवश्यकता। आज जब ये महामारी जब फैली तब कहने लगा हाथ धोकर जाइए, अंदर के कपड़े बदल कर जाइए, ये सब बातें जब ध्यान में आई, ये हमारे आचार्य पहले से कह कर रहे हैं, जो व्यवहार में भी था। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को लोक व्यवहार में कहते हैं आइए आइए स्वागत है आपका, जरा हाथ मुंह धो लीजिए और बैठिए। फिर ये जो हाथ मुंह धोने की परंपरा रही है, किसी भी प्रकार के बाहरी वातावरण से आप जब घर में आ रहे हैं तो कम से कम किसी भी प्रकार का बाह्य संक्रमण जो है उसको आप बाहर छोड़कर फिर अंदर आइए, ये भी इस प्रकार का एक एथिक्स के अंतर्गत आता है। तो वैयक्तिक स्वस्थ व्रत के अंदर, वैयक्तिक सद्व्रत के अंदर ऐसी बहुत सी बातों का समावेश करते हुए आचार्यों ने हमारे सामने रखा है। इसी प्रकार सामाजिक सद्व्रत जिसकी आज आवश्यकता है बहुत ज्यादा। अब आप देखिए छोटे छोटे शब्द लेकिन उसके भाव का कितना बड़ा अर्थ निकलता है। पर परुष वचन सहिष्णु, सद्व्रत के अंतर्गत आचार्य कहते हैं कि दूसरे के कठोर वचनों को सहन करने की सामर्थ्य वाला होना चाहिए। अब आप देखें कितनी बड़ी समस्याओं का समाधान इस एक बात से हो जाता है। दूसरे ने कुछ कठोर वचन कह दिया, मैंने उसको टॉलरेट कर लिया, वो वही समाप्त हो जाती है। पर आचार्य को ध्यान था कि समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति में सद्गुण होना चाहिए। पर परस वचन सहिष्णु, और इसे बड़े की बात देखे पूर्वाभिभाषी, आप चल करके पहल करके बात करिए सामने वाले से, कि सामने वाला मुझसे हेलो हाय करे उससे पहले मैं चलकर पहल करके उससे बात करूं। उसके मन में किसी प्रकार की ग्रंथि गांठ कोई रही हुई होगी तो पिघल जाएगा। वो करे पहल करके दे रहा है, इसमें कोई अहंकार नहीं है और सामने आकर मेरे से बात करना जा रहा है। तो सामाजिक सद्वृत्त के अंतर्गत इस प्रकार का भाव, एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा है, ऐसे कुछ पारिवारिक सद्वृत्त के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि एक परिवार का मुखिया होने के नाते उसके लिए क्या सद्वृत्त है। उस परिवार के आश्रित, उसके अपने सीनियर सिटीजन, उनके पेरेंट्स हैं, उनका पहले ख्याल रखिए। घर में कोई गुरु आए हुए तो उनका पहले आप पोषण आहार आदि की व्यवस्था करिए। घर में कोई अतिथि आए हुए तो उनका ध्यान आप रखें। और उससे भी बड़ी बात कि जो उपाश्रित हैं आपके, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, आपके नौकर चाकर हो सकते हैं, आपके अधीन कुछ भी हो सकते हैं, जो आप पर आश्रित हैं, उनके योगक्षेम की व्यवस्था आप पहले करिए, फिर आप अपने लिए सोचिए। एक पारिवारिक सद्वृत्त के नाते हम इसको कह सकते हैं। ऐसे ही नैतिक और ऐसे ही संवैधानिक, इस प्रकार के हम इस सद्वृत्त को अनेक भागों में बांट सकते हैं। अब नैतिकता के अंतर्गत आज जब हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो एक तरह से इनमें स्थायी स्तंभ सा ही हो गया है। और इन स्थायी स्तंभों का विचार जब करते हैं तो इसी का जीस्ट जो सद्वृत्त आचार्य बताते हैं उसको रूपांतरित करते हुए नीति शास्त्र कह देता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु।
इन 3 चरणों में संसार की अधिसंख्य समस्याओं का समाधान हो जाता है। मातृवत परदारेषु, ये एक मॉरल एथिक्स है उस व्यक्ति का, ये कि संसार और में स्वयं की पत्नी के अलावा दूसरे को माता के समान समझना। आज हम देखते हैं 4 महीने से लेकर 80 साल की बुढ़ियों के माताओं के साथ, वरिष्ठ महिलाओं के साथ जिस प्रकार का अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस समस्या का समाधान केवल इस एक भाव को जगा देने से हो सकता है कि संसार में परदार जो भी है वो सब माँ के समान है। तो जितना ये प्रपंच हो रहा है, जितना ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट जिनके साथ हो रहा है, इस एक सूत्र से इसका समाधान हो सकता है। दूसरा सूत्र जो हमें मिलता है कि पर द्रव्य सुरोष्टवत, जो दूसरे का धन है वह मिट्टी के समान है, जिसे आचार्य चरक कहते हैं नान्य स्वमाददीत, दूसरे के धन को ग्रहण मत करिए, और नान्य श्रियम, दूसरे की संपत्ति है कोई, उस पर भी आप अधिकार मत रखिए, मत मानिए। सारांश उसका निकलता है कि अपने परिश्रम से जो कोई चीज हम प्राप्त कर रहे हैं उस पर ही मेरा अधिकार है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो परद्रव्य है, जो दूसरे का धन है, जिस पर मेरा हक नहीं है, वह मिट्टी के समान है, तो जितना भ्रष्टाचार, जितनी लूटपाट, जितनी मारपीट, जितनी छीना झपटियां संसार भर में हमको देखने को मिलती है, इस सूत्र का ठीक से परिपालन यदि करने का हम समाज में स्थापित कर देते हैं, तो पर द्रव्य सुलोष्टवत के आधार पर जितना आर्थिक कदाचार हो रहा है, हजारों करोड़ों के बैंक घोटाले हो रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ से लूटपाट करके जा रहा है, थोड़ी सी राशि के लिए प्राण हरण करने में किसी को संकोच नहीं होता है, ये सब जो नैतिक सद्वृत्ति की बातें हैं, इनको हम स्वीकार करते हैं, तो हम कर सकते, इसको एक समाज को एक आदर्श रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ एथिक्स भी हमारी बनती हैं, जो समय समय पर परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहे। 5000 साल पहले जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उस समय कुछ संवैधानिक दायित्व अलग प्रकार के थे, आज के संदर्भ में संवैधानिक दायित्व अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो समय के हिसाब से परिवर्तनशील सद्वृत्त को समसामयिक व्याख्या करने की जरूरत है। जब चरक सद्वृत्त के अंतर्गत कहते हैं कि चतुष्पथानाम नमस्कर्ता, अब उसका सामान्य अर्थ यदि हम निकालेंगे कि चौराहों को नमस्कार करके जाइए, जिसका आज के संदर्भ में कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन जब हम इसको जोड़ देते हैं कि आप चौराहे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां कोई ट्रैफिक सिग्नल है, वहां कोई ट्रैफिक रूल है, आप उसको फॉलो करिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बन जाती है। तो सद्वृत्त के अंतर्गत आद्योपांत जितने विषय कहे गए हैं, हम उनको चाहे कितने रूप में कैटेगराइज करें, कितने रूप में विभाजित करें समझने की दृष्टि से, लेकिन एक आदर्श समाज, एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श परिवार और एक आदर्श समाज, एक आदर्श सृष्टि, इन सबको उनके सब देखने के प्रति जीवन दृष्टि हमको जब प्राप्त होती है, वो इस सद्वृत्त के माध्यम से प्राप्त होती है। जब हम कहते हैं आज हमें एक संकल्प लेना पड़ता है विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा को कि हमें पृथ्वी बचाने का आंदोलन चलाना चाहिए, हमको जल जंगल जीवन बचाने का आंदोलन करना चाहिए, उस विषय में कुछ सोचने की जरूरत है। हम तो यह संस्कार से कहते हैं, जब कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, ये धरती मेरी माता है, मैं इस धरती का पुत्र हूँ, इस संस्कार को पुनः स्थापित करने की जब आवश्यकता होती है, तो इस धरती जब मेरी माता है, तो इस धरती पर रहने वाला प्राणी मात्र मेरा बंधु है, ऐसा बंधु भाव जब हमारे सामने आता है, तो फिर आज जितनी विषमताएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं, उस विषमता का सबसे बड़ा कारण है ममता का अभाव। क्योंकि जब तक ममता नहीं होगी तब तक समता नहीं आ सकती। समता आने के लिए ममता होना आवश्यक है कि मैं, ये हमारा बंधु है, ये किसी विपत्ति में है, मैं इसकी किस प्रकार से मदद कर सकूं। ऐसी ममता जब मेरे हृदय में उपजेगी तो फिर समता का भाव आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि केवल मैंने एक आउटलाइंस दी है, और भारत इस नाते बड़ा समृद्ध है। आप संत रविदास को देखें, गुरु नानक को देखें, गोस्वामी तुलसीदास को देखें, छोटे छोटे सूत्रों में सद्वृत्त को उन्होंने समझा दिया। तुलसीदास जी जब कहते हैं कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई, दूसरे का हित करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से लेकर कोई अधर्म नहीं है। तो इतने संक्षेप में बताने वाले हमारी संत परंपरा समाज में रही है, समाज सुधारों की एक परंपरा रही है, न केवल आयुर्वेदीय आचार्यों ने, बल्कि समय समय पर यह समाज ने, जिन समाज के जो अग्रणी नेता रहे, जो अग्रसर रहे, उन्होंने इन सब विषयों को मानव के सामने बार बार कहते रहे, और इसी कारण एक आदर्श समाज, आदर्श परिवार, इसकी व्यवस्था हमारे यहाँ बनी रही। और केवल चिकित्सा के नाते नहीं, जीवन दर्शन के नाते, जीवन की दृष्टि से भी बहुत सी ऐसी बातें जो चिकित्सा शास्त्र से समाज शास्त्र में, समाज शास्त्र चिकित्सा शास्त्र में एक दूसरे पर आदान प्रदान इनका होता रहा। और अच्छी बातें जितनी भी थी, जो व्यक्ति हित में थी,
जो परिवार हित में थी, जो समाज हित में थी, जो सृष्टि हित में थी, उन सब का व्यवहार, लोक व्यवहार में इसको सुनिश्चित करने के लिए बार बार आग्रह पूर्वक कहा गया, व्यवहार में लाने की कोशिश की गई। और इसी कारण से एक आदर्श समाज हजारों हजारों सदियों साल तक ये बना रहा। कालांतर में जिस किसी भी कारण से विकृतियां यदि आई हैं, तो उन विकृतियों को हम पहचान करके जो ट्रीटाइज, जो समृद्ध साहित्य हमारे पास है, एक बार इसको फिर से हम पुनर्स्थापित करते हैं। तो जैसा आपने प्रारंभ में कहा कि जिस प्रकार की कामना आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि वन अर्थ वन पैथी, संसार भर के स्वास्थ्य की संरक्षा के लिए, ये हमारा संकल्प भी है कि हम सारे संसार के प्राणी, न केवल संसार के लिए, मनुष्य मात्र के लिए नहीं, हम तो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करने के लिए निकले हैं यदि, तो इस भाव को फिर से जगाने की आवश्यकता है, फिर से इसको स्थापित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि प्रारंभिक परिचर्चा के नाते इतना निवेदन करना मुझे पर्याप्त लगता है, ताकि ये जो कुछ कैटेगराइज करके, कुछ वर्गीकृत करके मैंने सामने रखा है, इसके अनेक उद्धरण, अनेक सूत्र मेरे नए साथी भी रख पाएंगे। मुझे लगता है इस समय इतना निवेदन करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। इति शम नेति शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Kamlesh. Thank you so much. बहुत बढ़िया जी. You have again touched on all the deep points that are important for revival. कि आपने जो प्राणियों की चीज जो बताया, and the connections between all the living things, all the connections between the message of Adi Shankara. We need to revisit those Shankaracharya's messages of Advaita Vedanta, the Jain philosophy that is also came out from our land. So, Rajasthan, you have seen all those wonderful Jain temples there in Rajasthan, in Mount Abu, and I feel that revival is there. खाली हिंदुस्तान में नहीं, अलग-अलग देशों में भी ये सोच है. अब we need to connect. हमारी प्रोफेसर साहब आ गया लाटविया में, बाल्टिक कंट्री लाटविया में, रीगा में है. शांतला जी, प्रियदर्शन जी मैसूर से. अब शांतला जी is MA in Sanskrit also, and MSc in environmental science. इसका मतलब we have people there. प्रोफेसर लोग, इस शर्मा जी है मॉरिशस में, he is connecting with Africa. तो उस तरफ भी है लोग बाग. So we can take this as a first step. We can take this forward. So Pranam ji, thank you for such a wide and wonderful introduction, touching all the points of SADVRITA. And we hope that we can continue these discussions outside the context of these and also. Namaskar ji. Right. Our next speaker, our senior Professor Saab from Uttarakhand, from Agnihotri ji. Agnihotri ji, namaskar ji. Namaskar, sir. The floor is yours, ji. We look forward Thank to you, Principal Madan sir. Namaskar ji. अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. I feel honored to be present here for the deliver of a lecture on the topic Ayush SADVRITA today, and I am very thankful to Dr. Pawan Sharma, the whole team of IRES, and my all very senior persons there. I have already sent a message, and I would like to request Dr. Pawan Sharma to please share my slides, which I have already sent him, so that I would continue my talk. So starting with our Professor Madan Sharma sir, Professor Vishnu Prasad Sharma ji, our Professor Dr. Kansal ji, Dr. Vishnu Priya ji, Manish Dikshit ji, so many persons to whom I have sent my today's link there. I am very glad to see all these big guys and dignitaries. The topic which is given today, I am audible? Yes, sir. We can hear you. Okay, thank you. The topic which has been decided for today's webinar is SADVRITA, along with the Ayush chapter, and in what way SADVRITA is responsible for the individual's health and for everybody's health. As the one will be healthy, so will be the society. So, Dr. Pawan Sharma sir,
Please, would you please like to share my PPT? डॉक्टर साहब शायद जयेश जी के पास है आपके Dr. Jayesh, presentation. Dr. Yes. Jayesh, would you please? Sharma will be sharing. Okay. Sir is Sharma having. ji. I'm just connecting. I'm calling him. Okay, apologies. He's there. He's there. Sir, I think network issue in his side. I So I'm think that just is- calling and checking out. Sir, आप शुरू Okay. कर सकते हैं, मैं बात करता हूँ. I am. So let us see what is Sadvritta. If one starts doing some charity or does some important work for the favor of others, will it simply cover the chapter Sadvritta? Before that, I would like to establish the fundamentals that who is to perform the Sadvritta. As our previous speaker, Kamlesh ji, made all the preface for today's topic and covered all the possible areas where one is supposed to perform good work, so that the output will be given in a form of the noble deeds. So noble deeds, for performing the noble deeds, who will be the doer? In that connection, I would like to say that whosoever will be the doer must be enjoying the good health. In that connection, the physiological concept of health is equally important in the terms of the said definition. So it is very, very necessary that to whom I should say that a person is capable to perform Sadvritta. In the reference of health, if I just define that physical health, mental health, social health, along with the spiritual health, if all these things will be there, then a person will be said to be healthy, and he is the right person to perform the noble deeds. For performing noble deeds, the healthy person is needed. So the health itself is important for all these sectors, as it is well defined by Acharya Shushruta, samadosha samagnischa, samadhatu malakriya, prasanna atmendriyamana swastha iti avdhiyate. Here, the soul is nirvikar prasatma sarvut gunadi. Here, when we talk about the person atmi, that the person, the himself, the person, the own self, he is supposed to be pleased by physical, mental, and social and spiritual level. Then only he will be in position to perform some good deeds which is favorable for his health, his physical health, mental health, along spiritual and along with the social health. The social health will incorporate the whole of the area of that Sadvritta concept. So the physiological definition of health is defined at the level of functional or metabolic efficiency of a living being. These are physical concepts. As per WHO, the harmonious balance of physical, mental, social well-being of the human individual integrated into the environment and constitutes health. These are the some subsectors or some sub aspects which are also to be taken into consideration. Then only we can decide that a person is healthy, and now he will perform the good works. So as far as the preservation is concerned, we have got the 5 levels of prevention: the rehabilitation, the disability limitations, and the early diagnosis and prompt treatment, and the specific protection along with the health promotion. We talk about this thing that we are going to have our the focal man or our hero who will perform the Sadvritta. For that, we say that the health promotion is the process that enables people to improve or have greater control over their health, prevention from diseases, protection and promotion of all aspects of health. So we are just emphasizing over the status of health simply because that a healthy person is supposed to perform the Sadvritta. So what are the measures and for restoration and promotion of health, which if we talk about this, because we are just making a preface, out of that we will get some place of Sadvritta. From there we will start our journey on talking about the Sadvritta. So according to Ayurveda, health is the dynamic integration of environment, body, mind and spirit. Ayurveda lays
great emphasis on preservation Sorry, and sir, protection. sorry to interrupt you. I am sorry, I was away from the machine. Just No I am problem. sharing your presentation, sir. Okay, you Just start right from first one. You start first one, we will just recapitulate. right, sir. Thank you, sir. Thank you. No problem. We are all one and we will bear with the this small delay. Yeah. This is just introductory. Okay. And then we talked about the status of health in different aspects: physical, mental, social, spiritual, with the reference of our Achar Shushruta, Samdosha Samagnisha Samdatu Malakriya, Persona Spindimana Sutta iti Avitiyate. And the next one. Next one. Planning Wednesday or Saturday. We gave the aspect. Wednesday, Saturday or Wednesday. Yeah. Now, next one. On next slide, we talked about the physiological definition of health, which we have just covered. Yes, please. Next one. In this slide, as we talked earlier, that in what way we are supposed to discuss the health. So health is defined as a level of functional and metabolic efficiency of living being. This is one thing very important. If a living being is enjoying the good status of health, then only he will be capable to perform the noble deeds known as the Sadvritta. And we were talking about the 5 levels of prevention. We can escape. Dr. Pawan, you can go for 2 further slides. So we were talking about the measures for the restoration and promotion of health. And here falls the basic concept which we are talking on today's program. That is the observance of Dinacharya, Raticharya, Ritucharya, Vegadharan and Sadvritta. So a person who is performing Dinacharya, Raticharya, Ritucharya and Vegadharan concept and protocols be capable to perform the Sadvritta. This is what we want to put forward, that this is Sadvritta is not the thing that we cannot start our table from 100. We have to start with 0, 1. So in this way, this is the way we are going to start our talk over the Sadvritta. Promotion of mental health. This is one thing very, very important. The next one, please. Next 2, you can skip 2 more slides. In what way we are supposed to get our mental health promoted by the help of the observing the Sadvritta. This is what the basic concept of this, that a person who will perform Sadvritta will enjoying the very high level of mental health. And for that, as the vaccination is helpful for the physical health, so is the vaccination of this type of activities be helpful for the standard making of the mental health. So vaccination of mind through education with Satya Buddhi of Ayurveda and Ritambara Pragya of Yoga. These 2 tools are our vaccines which will be helpful for the promotion of mental health. Resultantly, that person who is enjoying the high standards of mental health be capable 200 times to perform the Sadvritta. Next one. Ayurvedic recommendations for achieving the best lifestyle. The Sadvritta concept is also falling in this very category. So, by observance of Dincharya or daily rhythm, observance of Sandhyacharya, evening rhythm, observance of Ritucharya, that is seasonal rhythm, and observance of Vegadharana, control over physical and mental urges, along with the observance of Trayopastamba, that is Ahar, Nidra, and Brahmacharya, and then he will be capable to perform the observance of Sadvritta, the noble deeds. So I peeped into the matter from where I should put forward the concept of Sadvritta for a human being who is enjoying his health. So first he has to improve his physical health as such, and then only he will be capable to do further good work. Because Sadvritta itself is not limiting himself simply to the level of only doing good works. All the works he is performing, if a healthy person will perform, that itself will be Sadvritta, either for his own health, for his own self, or if he does do for the society, it will be the social work. So types of Sadvritta in this category, as the Kamlesh ji was talking about,
we are just putting forward the categorized form of this Sadvritta. These code of conducts are classified into following groups. The Vyavaharika Sadvritta, that is the ethical codes of conduct. Samajik Sadvritta, that is the social codes of conduct. Manasik Sadvritta, that is the mental codes of conduct. Dharmic codes, that is the moral concept codes of concept, and the Sharirik Sadvritta, that is the physical codes of concept. And here we are just referring a lot of say references and details, and I am putting and leaving to this webinar as a reference stuff. Anybody who will be interested may go through, because it is a very long process and we are always with a lack of time. So each and every point is important. I'll just first read first and last, and it will be taken as read. So always speak the truth. It is said that dharma dusar satya samana. Baba Tulsidas ji also spoken in his Ramcharitmanas. So the fact is, a person who speaks truth, for him it is a virtue that he need not to remember what he has said, where he has said, and to whom he has said. So सत्य बोलने के लिए ये याद नहीं रखना पड़ता है कि उसने कब कहा और क्या बोला था, क्योंकि जो बोला था सत्य बोला था, जो तब सत्य था तो वो आज भी सत्य होगा. So this is very important. We start सत्यम ब्रूयात् धर्मम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम सत्यम नान्यतम ब्रूयात् एतत् धर्म सनातनः. ये जो बात कही थी उसमें भी फर्स्ट पॉइंट आता है सत्यम ब्रूयात्. So always speak truth, and truth is try to speak at the proper time and words. This is important. It means speaking truth is also important, having some instruction for the following the truth itself. So in the same way, so many things are supposed to do for Vyavaharik Sadvritta. Means a person who is performing good activities or talking with anybody is important that ethically his version, his speech should be safe, not pinching, not bitter for others. So good stuff is there, each and every point. And not only speaking, sleeping, every activity which are performed by any individual is very important. So the stuff itself reveals a lot of information and protocol which is to be observed by each and every healthy person, and that protocol will amount in a form of the good activities or novel deeds. So Vyavaharik Sadvritta is still continued. A lot of references and the stuff I have given regarding sleep, regarding taking diet, everything is there, and I will continue to talk on this issue under some other headings like Samajik Sadvritta. Social conducts of social codes of conduct is equally important, where if I just pick one thing that always remain in the company of teachers, elderly persons, and successful persons, siddha and religious, and always give respect to serve them. This is simple one word, but it gives a lot of things. Means this will provide you, this association will provide you the positive energy. One thing I'm just picking a third line, always even in the company of teachers, elderly persons, and successful persons. These are the tether of positive energy, knowledge, everything. So association with them itself will make you more and more sound as far as the mental health is concerned, which is helpful for performing the noble deeds. I am summing up with the other slides. So Samajik Sadvritta is still continuing regarding the social codes of conduct. Here, so many things are there, but one thing is there that one should not abandon relatives, affectionate, who have helped you in times of difficulty and who know the deep secrets of the family. I'm just picking one of the pearl. Every action, every statement is a diamond. But the fact is this: if we talk about the this sentence in the present scenario of 20 months back, this COVID worldwide pandemic, we must remember our relatives, our affectionates, our persons, those who helped me in a form of our safai kamchari, our policemen, our postmen, our courier person, our savasad, our helping hands, our doctors, our colleagues, our friends, our government, everybody who have helped me at the time of crisis. These are to be honored, these are to be remembered, and these are to be respected.
This is the side where we are supposed to. And if we do so, if you just make an effort to cross a blind person the road, whether he say thank you or not, but your mind will say you that you have done one important, one favorable, one good work by your own. So this is your health, which by which you could perform one person's help. So this itself gives you the mental promotion of health, and the Sadvritta is performed. So religious code of conduct, this is very sensitive issue. One should not limit himself that to which religion he belongs or to which jati he belongs. The idea is this: we are all one, having the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. So our idea is this, that we have to respect everybody's religion, we have to respect everybody's concept, everybody's opinion, everybody's viewpoint, and we have to stand for our viewpoint, for our concept, and there should not be any conflict. We have to make a compromise in our society. We have to be cooperative for each another. So this will generate ultimately the social harmony in the society, and it will again fall under the category of a Sadvritta performed by any healthy person. And this is very important. Code of conduct or codes regarding the taking diet. It is not important that you have to take diet, and diet, that food stuff should be metabolized very properly, and it should be assimilated, and it should result in a form of the good health. Not only this, as we repeatedly hearing from Dr. Sudhakar Reddy or our text, it is out there: what to eat, where to eat, when to eat, how to eat, and how much to eat. These are the things which are very important when a person will develop or carry this knowledge on his taking diet is important. But there are so many sectors. Instead of what is the balanced diet, instead of that, when a head of the family is supposed to take diet, he should see that all his dependent have taken diet, even including his helpers, his servants, and everything. So goes the case with the diet. Diet offering to others means we have to offer the first roti, first bread to cow. The scientific concept was this, that the cow, the dog, they have got the wonderful smell sense capacity. So they smell out that whether any poisonous substance, any toxicity is there or not, the food you are going to provide to others or going to take yourself. So that was probably the hidden concept, scientific aspect, that providing the food stuff prepared in your kitchen first to the other person to get itself utilized by your dependents and other persons, and it will improve because they have got the very positive smell capacity. So this was the thing, and what we have to do after taking food. So food itself not only comes under the category of Upasramba, it also carries so many do's and don'ts under the heading of Sadvritta, that how one is supposed to take food for own self and how he is supposed to provide the food to the his dependents. Then the same thing is continuing. I have just collected a lot of stuff because it is said that when I am speaking or I am presenting, I am supposed to cover the most of the areas which is responsible for making a person Sadvrittaful, and then whatever is there. So persons will follow and they will refer the stuff. Okay. So this is very important. Here we would like to stay a little more. Food towards the women and population. Though it has been also described in our Sushru Sangita regarding the Garva Vaktanti and all that, but it carries a lot of things. As our Kamlesh ji talked about that, चौराहों को नमस्कार करके चलना चाहिए, बहुत सही है. The fact is that चौराहा means wherever the crossroads. So नमस्कार का concept क्या है? जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम सबसे पहले सावधान होते हैं. हम reluctantly ऐसे नमस्ते ऐसे नहीं करेंगे. We have to stay, we have to be cool and calm. We will try to make an eye contact, and then we will fold our hands and say namaskar. It means we have to be alert first before paying namaskar to anybody. So goes the case with the crossroads. You have to be alert first before to cross the crossings. This is what था हमारे आध्यात्मिक तरीके से, मानवीय तरीके से, सामाजिक तरीके से आचार्यों ने लिख दिया कि चौराहों को नमस्कार करना चाहिए. इसके मतलब नहीं चौराहों पर वहां पर कोई मंदिर है, कोई मठिया है, कोई मुद्रा है, कोई धर्मस्थल, इसलिए नमस्कार करना चाहिए. चौराहों पर सावधान होके हमें निकलना चाहिए. ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा, वैजी बोले थे कि we have to be very careful regarding the पर्दारेषु मातृव्रत.
पर वैसे लोष्टवत की बात आई तो परदारेशु मातृवत कहा है, बट क्योंकि मेडिकल साइंस एंड हैविंग द वाइटल concept also, so Vivai Karma is very much there. When to go for copulation, when to go for sambhog, and with whom you are supposed to go for sambhog. Here, one thing is very clear, which I used to say for last 30 years, and it is very important as far as the AIDS is concerned. Vivayam Chokurvita Yoshita Nijyasai. Yoshita means wife, patni. Vivai means intercourse. Vivayam Chokurvita Yoshita Nijyasai. One is supposed and advised to go for intercourse with the wife. So the word is the sentence. If I say Vivayam Chokurvita Yoshita Sai, तो भी बात बन जाती है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ व्यायाम करना चाहिए. But they also put very clearly and very cleverly the word Nijya. Vivayam Chokurvita Yoshita Nijya Sai. One is supposed to go for intercourse for his wife. Nijya mane apni. If it is so, there is no possibility of HIV. There is no concept of AIDS. The very important, as it is a matter of that we should not indulge ourselves with multiple unsafe sex partners. So modern medicine, unsafe and multiple used to use these words, but in our Ayurvedic test, Vivayam Chokurvita Yoshita Nijya Sai. So this is itself is of great protocol and great instruction for the population. And as far as the say that Pardare Shumatvat, हमें समस्त महिलाओं को अपनी पत्नी के अलावा माता के समान करना चाहिए कि रूप में मानना चाहिए. So this is what the code of conduct regarding the women's the relation with the ladies and the population itself, and then the codes regarding the studies. Very important. It has been always said regarding the we should not go for studies during the Sandhya Kal, I mean the evening hours, and when there is a meteors and ulkapat or raining, high raining, if there is a earthquake, means some wherever some natural calamities or some crisis is there, it may be geographical crisis, it may be mental crisis, it may be social crisis, maybe any fire outbursts, anything. That is not the time to study. Even at that time, that evening hours, because there is the dimness of light, so it will curse or it will be harmful for the eyes. So recitation or rememoration or chanting of shlokas can be done, but one should not use eyes for the reading books. This is what the instruction regarding the studies. So now this is the concept for the mental activities, and here in mental activities, as we are talking about, one should not be lethargic, one should not be very slow, one should not be very fast, one should not be of attitude postponing the works which are very important. So one should be very committed for these activities he is supposed to perform. So many things are there. We cannot use this very important time. And now the Sharirik Sadvat, here comes the physical code of conduct, which completely takes the whole of the concept of the Dinacharya. So I am trying to skip here. And so goes the Sharirik Sadvat. It is still continuing physical codes of conduct. Now, what is the present scenario? One, the few salient features that what is happening. Increasing incidence of suicide which are taking place irrespective of the age. That is right from 7 years to any age, any sex, marital status, married or unmarried, religion, educational qualification, and status and even designation means no value. Any status, anything is happening in a form of suicide simply because of the lack of Sadvritta Palan. The fact is this, it seems that the Sadvritta Palan has now become the word in the dictionary. It's very difficult to see it in practice. So this is the high time that we should come forward and promote the concept of Sadvritta in the society for the betterment of the status of society and the betterment of the every individual's health. So this is what is happening. We have to stop before it's too late. The way persons are getting frustrated, they are having depression. They are having depression with so many etiologies, maybe financial, social, employment system, social life, married life. So many things are there. Every nook and corner, you see the persons are not feeling pleased and with their cheerful face. So they are with no option left, going for suicide. So that can be
changed, or this can be avoided with the help of the concept of the observance of SADVRITA. So the benefits of observance of SADVRItta are two: arogya, that is the absence of disease, and the other one is the indriya, vijay. Then a person who follows the SADVRItta in all ways and means, including studies, diet, everything, will ultimately get the arogya, and he develops the control over the senses. So he becomes almost not only brahmachari, not only the persons who is capable to check himself as and when it is required. This is only because of the benefit of the SADVRItta observance. So where here I would like to close with the view that SADVRItta is also known as the Achara Rasayana. You please change my slide, Dr. Panchama sir. Please change. We talked about the present scenario, and next one. Next, please. Yes, here we talk that we have to stop this sort of suicidal tendency which is developing because of the frustration and stress, all depression. So we have to avoid it by following the Sadachar and Sadvrit. Next one. Next one. So the result of when our Sadachar or Sadvrita is arogya, he develops the disease-free life or health by observing the Sadvrita, and which ultimately develops the control over the senses. He becomes brahmachari, he becomes the capable to check himself as and when it is required in the terms of speech, words, actions, using, abusing, misusing, everything he falls under his control if he observes the Sadvrita. The next one. Next one. Here we are talking that this Sadvrita is also known as Rasayana. So what is Rasayan? In Rasayan we take with its definition, there's Rasayanam hi tadgriyam yet jara vyadhinashanam. This is one concept regarding that, that the thing which is capable to avoid the aging and also keeps away the diseases. On other hand, lavopayo hi shastanam rasadinam rasayanam. That thing is known as fair or acceptable, which gives the labh, the benefits of our Sadvrita, which I have already told, that arogya and indriya sanyama. So what Rasayan we can think? We are, when talking about the capable to control aging and capable to control diseases, an important innovative thought just falls in my mind that in Hanuman Chalisa, Ram Rasayan tumre pasa. Here we utter daily, every day utter daily the Rasayana. So this is also Rasayana. So the person who is having the Ram Nam as a Rasayana, what happens? We all know that Lord Hanumanji is away from aging and also away from diseases. So the Ram Rasayan is also equally important. If one gets this one, he also feels himself a person personifying Sadachar or Sadvrita. Lord Hanumanji personified all the Sadvrita. He was a yes man and very close to Lord Rama, and that reached to the Arogyam. Next one here, I think we reaches to the closer of today's talk. Next one. Yes, so we wish you all a very happy and healthy life by following Ayush Sadvrita. Thank you all, and my regards and thanks for providing me this opportunity to put forward this talk to this very international seminar. Thank you all. Thank you, Agnihotri. Thank you so much. You have taken us into the depths again. Excellent, sir. Excellent. Fine details of all the work. Pawanji. Excellent, sir. Excellent. मतलब विके अग्निहोत्री जी ने और कमलेश सर ने दोनों ने ऐसा ज्ञानवर्धन किया. Thank you. बहुत सर, बहुत अति उत्तम सर. समय तो नहीं अधिक हुआ. ऐसे ही आशीर्वाद की आशा थी. बिल्कुल. समय तो नहीं अधिक हो गया. नहीं कैसी बातें कर रहे. नहीं समय का ख्याल रखिए. Thank you sir. Thank you very much.
Madan sir. Hanji, Pawanji, our next speaker, we are going on our India tour. We have touched Rajasthan. From there, we went to Hardwar, and now we are going to HASSAN. And we have with us Gurubasavaraj. Gurubasavaraj, namaskaram. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskaram. Thank you for joining us from HASSAN. I hope it you, is always a delight to connect with all of you people in SDM HASSAN. Your scholarship, your academic excellence is something that we all admire here. So the floor is yours. And while Basavaraj joins, I have been scribbling some notes here, and I leave this just so that we might have something for discussions later. That Hindustan, based on the first two speakers, Hindustan has seen Swachh Bharat mission. We have seen Atmanirbhar Bharat. अब मेरे मन में ये सोच आ रहा कि क्यों नहीं स्वस्थ भारत मिशन, जिसमें we bring all the principles that we have learned today and that we will learn from the next three speakers also. I leave that as a question. हमारे साथ है जी प्रोफेसर विनोद शर्मा दिल्ली से, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी से, कल भी थे डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन के लिए. So we are welcoming Professor Sharma ji also to us, and we will take all these issues later as we start discussing after the presentations. Basavaraj ji, namaskar. Namaskar. Namaskar, sir. My screen is visible, sir? Visible, very nice. Thank you. Please. So, namaste one and all. Om Shri Gurubhyo Namaha. My prostrations to my role model, my idol, Thangavelu sir, and my guide and my advisor, Sharma sir, and the two luminaries to whom I touch my forehead to their lotus feet of Agnihotri sir and Kamlesh sir. With all your blessings and the rest of the total August gathering of 28 people, I just want to highlight some of the very practical, very important, which are already covered by the two luminaries. So, namaste once again. So, when it comes to the concept of Swathvritta, we can find the reference in two Bruhatrayas majorly. One is Charaka Samhita Sutrasthana Adhyaya 8, that is 8th chapter, that is Indriyopakramaniya Adhyaya. The second reference we can get about the concept of Sadvritta is in one more ancient text, that is Ashtangradaya Sutrasthana, wherein in Dinacharya Adhyaya there has been a little glimpses of Sadvritta. So these are the two main references where Sadvritta is told. Apart from that, in Charaka Samhita, Chikitsa Sthana, even in the very first chapter, there has been a mention about Achara Rasayana under the concept of Rasayana, which is also a type of Sadvritta that I am going to highlight next. As already told by luminaries, let us recapitulate once again on the word meaning of or the definition of Sadvritta. That is Satam Sajjananam Vyavahara Jatam Sadvrittam. The meaning, which is explained by the commentator Chakrapani on the Charaka Sutrasthana 8 chapter 17 sloka, is that Satam means a regular practice that one can adopt in one's individual life, which has been a resultant of being in communication with the Sajjanas. Means when an individual learns the ideal code of conducts of various patterns of behavior in his life from his contact with the Sajjana, the Apta, the learned man, the wise man. Those all codes of conducts, the behavioral lifestyle ideologies and principles can be called as Sadvritta. Here, Vritta means we can understand the cycle or a rotation or a routine. Hence, all the behavioral codes of conducts in order to enjoy the complete health and a good human life, which has been a resultant of the communication with the good people or by being with the good people, is termed under the concept of Sadvritta. Then what and all are covered under Sadvritta? It is still more made it clear by Acharya Chakrapani ji. That is Satam Ruttam Anushtanam Deha Vak Mana Pravrutti Rupa Sadvrittam Anushteyam.
Means in Swathvritta, what are all the different qualities or what are all the different entities or the components that one can adopt as the daily regimen are related to Deha, the Sharira, Vak, about your communication, Mana, your psychological faculty, the Pravrutti Rupam, Sat means you have to be indulged with an interest of the betterment in Sharira, Vak, Mana, Pravrutti. So in all these faculties, you have to adopt the model rules of the ideologies of Swathvritta. After knowing the mere meaning of Swathvritta being a life principle or an ideal codes of conduct that one can adopt in the faculties of Sharira, Vak and Mana, now let us understand what if one adopts all these Swathvrittas, what can be the benefit that we can see. It has been beautifully mentioned in the Dinacharya Adhyaya of Ashtanga Hridaya, where Acharya explains as the outcome of adoption of the Swathvritta. So, Ardra Santanata, Tyagaha, Kayavak Chetasa Damaha, Swartha Buddhi Parartheshu, Paryaptam iti Swathvrittam. One who indulges Swathvritta, how he should be is Ardra Santanata. Means unconditionally they will love, they will have an affection, they will have a care and concern about all the individuals. Tyagaha, the person who adopts the code of conduct called Swathvritta will have the sense or an urge for sacrificing for the good cause. Kaya Vak Chetasa Damaha. Kaya means Sharira, Vak means control over his speech or communication, and Chetasa means the mind or the manas. Damaha, control. The person who adopts Swathvritta will have the control over the body, his speech and thoughts, and his mind as well. Swartha Buddhi Parartheshu. By adopting Swathvritta, what happens is, in spite of having only the narrow thinking of Swartha, the person or an individual who understands and adopts Swathvritta will become Parartheshu, means for the benefit of not only an individual, for the benefit of the community, the person starts thinking. From the state of Vyasti, the manas will become broadened to the Samashti Drishti. Vyasti Drishti is nothing but a narrow-mindedness or the Sankuchita Manobhava, whereas Samashti Buddhi or Samashti Manas is the very broadened mind which one gains when he adopts or she adopts Swathvritta. Paryaptam iti Swathvrittam. When he adopts, when he indulges with all this Ardra Santanata, Tyaga, Kayavak, Chetasa, Damaha, Swartha Buddhi Parartheshu, then these are the lakshanas, these are the features of the person who adopts the Swathvritta in all those faculties. Then, as already told by luminaries, Sharirika Swathvritta, because I tried to count the total number of formulae which are told as to be adopted or to be avoided under the Swathvritta, I was very much astonished to see that over 300, around 300 formulae, means do's and don'ts, have been advised under the heading of Swathvritta to be adopted by an individual to lead a good life. So, for our convenience, let us divide these hundreds of Swathvrittas, the codes of conduct which are told in classics, under the four main headings for our convenience. One is Sharirika Swathvritta, Manasika Swathvritta, Samajika Swathvritta, and Adhyatmika Swathvritta. Coming to the first one, Sharirika Swathvritta. As I said earlier, luminaries have already thrown the light very wonderfully. I am going to pick up the most relevant, most easiest that can be adopted, and very unfortunately, they have been forgotten these days. Only such points I have already picked up from the hundreds of Swathvrittas told in the classics. The first one, the physical hygiene, what we can understand in these days, that is Sharirika Swathvritta, Dvau Kala Upasprushet. It has been told in the 8th chapter of Charaka Samhita, under Indriyopakramani Adhyaya, under the Swathvritta Varnana, or explanation. Dvau Kala Upasprushet means what? One should take bath twice daily. You see how beautifully in the thousands of years ago, they understood the importance of the hygiene, physical hygiene. Once in the morning before one leaves the home, once after coming back from the home, coming back to the home. So when one does the bath 2 times, the physical hygiene is maintained as well as freshness is maintained. Now the question is, the need of the hour is whether we are following it.
Second point, Malayaneshu abhikshnam padayoscha vaimalyam. Malayanas means the places or the parts of the body where lot of dirt can be deposited. For example, Malayana is, eye is one Malayana, nose, nasal orifices are one type of Malayanas, our ears, our oral cavity. These are the major Malayanas where the opened srotasas can be deposited with lot of pollens, lot of allergens, lot of dust, lot of antigens and lot of external particles, what we call as the mala. So these Malayanas, the eyes, the nose, the oral cavity, the ears, along with our extremities called the pada, pani, vaimalyam, you have to maintain the cleanliness of this. Now the question again to all of us and to everyone is how much we are indulged in the interest of keeping these Malayanas, namely eyes, nose, oral cavity and ears and pada and pani clean or hygienic every day. Third one, trihi pakshasya kesha smashru loma nakhan samharayet. Means in one paksha, means there is a time duration of fortnight or 15 days. One should cut hairs, smashru or the beards and nails at least 3 times. Means to say, one should undergo the haircut or the smashru or the beard shave and the nakha kartana, nakha samharana once in 5 days. Now again the same question, how many of us are following it? Prasiddha keshaha. Prasiddha keshaha means not the famous hairstyle that what we our youngsters are doing. It is well combed, well groomed hairs. This is very, very important. Prasiddha kesha happens when applies the oil. The very next point is Murdha, Shrota, Grana, Pada, Taila Nityaha. Murdha, scalp, Shrota, ears, Grana, nasal orifices, Pada, the foot and the sole, Taila Nityaha means Ayurveda, we are very much aware about the Abhyangam. These are the areas where Vata Prakopa is very much possible. The head, the ears, the nose, and the pada, the foot region. One, when applies regularly, tam visheshena shirapada sravaneshu tam visheshena shilayat. It is told by Acharya Sushruta. Means every day we have to apply the oil to the scalp, follow the pratimarshanasya to the grana, and karna purana to the karna, as well as padabhyanga and paniabhyanga, which is very important. Same question, how many of us are following it? Because of dry hairs, because of keeping the skin dry, the young generation is more afflicted with the dry eczema, skin manifestations, skin allergies, as well as the respiratory allergies. That is more common. So it has been already told in Sharirika Sadvritta that Murta, Shrota, Grana, Pada, Taila, Nityaha. How beautiful. There are many such hundreds of Sharirika Sadvrittas that are told, but I have taken only the important one, easier ones, often forgotten ones, just to remind everybody about it that we need to follow it. Coming to the Manasika Sadvritta, Sumanaha means keep your mind calm and cool. Hriman, Lajjavan. Hriman means have the hesitation to involve in the bad activities. Mahotsahaha means always be spiritual, being in spirit. Spirituality is not only about the philosophy, spirituality is also about being in the spirit. Always be in the spirit. That is Mahotsaha. Amarshagnaha. Amarshagna means always try to eradicate and uproot the enmity and anger. See how beautiful it is told. Para Purusha Vachana Sahishnu. It was already told by our luminaries. Para Purusha Vachana Sahishnuta means mentally, if you keep your mind calm, if you are lajjavan, if you are having some hesitation in involving in the bad activities mentally, if you are very curious and very active, enthusiastic, and if you are able to uproot and eradicate the enmity and anger within you, and if you are able to tolerate, accept, and forgive and forget the Suchivat Parapurusha Vachana,
which is pricking you, which may criticize you, then the mental health is very, very, very much possible. But these days, what is happening is the people are not maintaining their normal mindset. They are not hesitant in involving in the bad activities. They are not active in the good situations. They are developing a lot of enmity and the anger, and they are very much sensitive against the critics. By responding to it, they lose their normalcy in the mind. So these are all the Manasika Sadvrittas that are told in the classical texts. Coming to the Samajika Sadvritta, Purvabhibhashi. I am again repeating what our elders have already told. Purvabhibhashi means one should initiate the communication. Kshamavan, one should forgive others for their mistakes, for the pain that they have given us. Sarva pranishu bandhubhutaha means identify the God's omnipresence in every individual. When it comes to the Purvabhibhashi, the people, and I think recently, everyone will agree with me that recently, maybe in 2019, WHO has come out with the year's slogan as "Depression, let's talk." Why WHO made that announcement? Means nowadays the cases of depression, the psychiatric depression, are increasing alarmingly. The escalating cost of the medicaments for the depression, the adverse effect of the drugs are alarming us to keep ourselves away from depression. For that, the first and foremost formula is Purvabhibhashi. You greet others, you initiate the communication, have a smiling face. But most of the youngsters are falling behind in adopting it because they are lost in their social medias, electronic gadgets, and they are very far behind in initiating the communication. And this attitude of not communicating with others, not initiating the communication between the people is the reason behind the mental stress. Then the concept or the problems of migraine, sleeplessness, anxiety, depression, fear, inferiority complex, isn't it? And all the dual polar-minded, bipolar mood disorders, those are all the outcome of not following the Sadvritta. That's why this is the need of the hour to think about it. Kshamavan. A few years back, I underwent a training where my mentor taught me the law or the scientific practice of forgiving others. Miracles happened in my life. I was healed totally from all the physical and mental complaints I had, and I could able to do well in my academics. Because we don't forgive others, we keep their negative feelings and negative memories within us. That leads to diabetes, that leads to hypertension, that leads to cardiac diseases, for which we go to the super specialty hospitals, we spend in lakhs, we waste a lot of time, and the adverse effect of the drugs, the non-availability of the facilities are in vogue, isn't it? So these are all the preventive measures. Coming to the Adhyatmika Sadvritta, means the spiritual or the philosophical codes of conducts told in classics. Dharmikaha, you should be religious. It doesn't mean that you should hate the other religions. In which religion you are born, in which race you are born, just follow it, follow the spiritual activities, the religious customs of that will keep you happy. Even the namaz that is being done by our Muslim brothers and sisters, the prayers that are offered in the churches, all the spiritual practices done by our Hindu friends, these are these days proven to be balancing our brain and bringing down the stress, bringing down the anxiety, and hindbrain activity, midbrain activity is being increased, and a lot more things are coming up saying that dharmika is not only dharmika, it is also vijnanika, it is also scientific. So you should be religious, following your own customs, your own religious activities. Astikaha. Astikaha means believing in God, believing in the super consciousness. Satyasandaha. Satyasandaha means being prompt, being truthful. When you are not truthful, you need to remember many things. You need to remember what wrong you have done, and you need to start acting in an artificial way. But when you are a Satyasandha, when you are truthful, definitely you need not worry about the
bad consequences because you are with the truth. Because it is already told, Satyameva Jayate, you can be truthful and you can be eased without any stress. Deva Go Brahmana Pujitaha means to have a spirituality, you need not go in search of temple always. You can find the godliness, you can find the spirituality in Go, the mother cow, in Brahmana, the priest or the senior persons, isn't it? You can just serve them, you can just help them, and being a spiritual person, you can lead a good life. So that's about the 4 aspects, that is physical, mental, social, and spiritual aspect. Even in Bhojana Vidhi, Sadvritta is told. How beautiful. It is often forgotten and must and should, everybody has forgotten, I think. Uttara Disha means always one should be directing his face towards the north while eating. But nobody follows it. Na naktam dadi bunjitaha means how beautiful it is told. Na naktam dadi bunjitaha means in the night, the consumption of the curds is contraindicated. Dadi or the curds becomes viruddha ahara in the night. Why? Why dadi? Dadi is also one of the kshira vikara. It is widely used, but why only in naktaha? Why only in the nisha? Night, dadi or curds is contraindicated because dadi is having abhishanti guna, kafakara guna, little bit, and more of abhishanti rather. Even the night duration or the ratri kala is having abhishanti guna. And by default, when we look at our BMR, even our basal metabolic rate has come down to the very little extent in the night because of the reduced body activity and mental activity. When all the sarvada sarvabhavanam samanyam ruddhi karanam, there is a saying. In that sense, when environment is abhishanti, when the physical body activities are going slow, they are more like abhishanti guna, and you consume the abhishanti ahara, it is going to add on to the abhishanti guna, and you may suffer from medaja vikara, kafaja vikara, and tamasika manobhava. Hence, one should stop consuming the curds at night. Na paryushitam. This is the most required message to the modern era. Na paryushitam means no stale food. But in the name of modern technology, people prepare the food, they keep it in the refrigerator, and they are going to eat it many. Nowadays, recently I heard that people prepare the sambar, for rice, what they eat sambar, they prepare it and they will keep it in the refrigerator, the deep freezer, they will make it into ice cubes. Whenever they want, they will take the ice cubes of that sambar, they will boil it. But recently, in one of the studies that I have attended, one of the webinar in Clubhouse, I attended, one of the top experts, Sadanand Maya, who is a top MTR expert of food, to whom is known by the world, he told that once you prepare the food and keep it outside, after 1 hour, the unhealthy bacteria growth in the food start increasing after 3 hours. Once you prepare the food, after 3 hours, the bacterial load every hour in that prepared food start increasing after 3 hours. But what about the food that you keep outside for hours together and that you keep outside for hours together and overnight and they keep in the freezer? Definitely it is bacterially badly loaded and it is very unhealthy. But this should be taught to the people these days. Along with this, the most wonderful thing, that is Achara Rasayana, which is told, before that, there are also do's that has been told, but don'ts are also being told in the purview of Sadvritta. There is na anruta bruyat, na anya, na vairam rochayet, na nastika, na nasikam kushniyat. One should not rub or just put the finger into the nose. This is a samajika Sadvritta. Na dantan vighattayet. One should not crush the dentures. In case of bruxism, they do it, isn't it? Na nasan vadayet. One should not just rub the nose in the public. Na asti abhihanyat. Somebody will break the knuckles, they start breaking the knuckles when somebody is speaking, while they're speaking to. It is very, very bad manners and it's also unhealthy. Na bhumi vilikhayet means people scratch their
soil in the surface when they are talking to somebody, which is very bad. Na chindya trunam. When they are speaking to somebody, they just pluck the grass in the outside, on the land. Na lostam mrudniya. So such many behavioral patterns, even the physical and behavior patterns are also told. And also the Adhyayana Sambandhi Sadvritta and also the Vyavaharika Sadvritta is also told. Along with that, one more reference of Sadvritta, that is in Achara Rasayana. It is told that Satyavadinam, Akrodam, Nivrittam, Madhyamaitunat, that big shloka is there, where it tells that in the chapter in the context of Rasayana, Abhayamalika Rasayana, Karapratichiya Rasayana, isn't it? Such many padas, Rasayana padas are there in the Charaka Samhita, Chikitsa Sthana. In that, in fourth pada, he tells very beautifully that one who practices Sadvritta, isn't it? One who attains the qualities of Satyavadinam, Priyam, Akrodaha, Madhyamaitana, means he, Acharya Charaka, lists out the features of an individual who is model, who is a role model for others, who is an ideal person to be referred to. If one attains those lakshanas, which are already told as a lakshanas of a Sadvritta following person, when they follow it, and Acharya Charaka himself has told that even if they do not consume Rasayana also, the person will get the Rasayana effect of Rasayana Dravyas by following the Sadvrittas and by attaining the features of Sajjana. See the beautiful. Once, if one becomes Madhyamaituna, Nivrittaha, if one becomes Satyavadinam, isn't it? One becomes Ahimsakam, isn't it? One follows all the physical, mental, social, and spiritual Sadvrittas. Even the individual, if he do not consumes Rasayana, even then he will get all the Labha Poya, Hisastanam, Rasayanam, all the Saptadhatus are nourished only by this adoption of codes of conduct. This tells about how much is the impact or the influence or the importance of Sadvritta. Following Sadvritta alone will give us the same effect as that we get it in the Rasayana Dravyas. So before I conclude, Sadvritta is a panacea of health formula for the complete, positive and perfect health. Panacea means it is a sagara, it is an ocean of health formulae, hundreds, and I have already counted more than 250. Still there were many to count, but the time was up. So Sadvritta is a panacea of health formula. It is not only just a code of conduct, it is including a panacea, a list of whole lot of formulae for the complete, perfect, positive health of an individual. What is the need of the hour after knowing and discussing a lot about Sadvritta? The need of the hour is to adopt the codes of conducts of Sadvritta into the every individual's life. That is what is left behind. And also the disease-specific advice Sadvritta should be incorporated into the prescriptions of the Vaidya. Why? Because in the 2019, if I am not wrong, in India, the total deaths were occurred. In that, it was found that 55% of the deaths were occurred because of non-communicable diseases. Recently, we had a pandemic infection of virus, COVID. By God's grace, it is coming down. But in 2019, it was reported that more than 55% of the deaths in India are because of non-communicable diseases, lifestyle disorders. Why do we come across the lifestyle disorders? We come across the lifestyle disorders because of our defective lifestyle. Where do our defective lifestyle prevails or exists? Our lifestyle defects exist in the entire day lifestyle. That is from morning till night. Samaswapna prajagaraihi is one of the wonderful quote that is told in the Sadvritta. Samaswapna prajagaraihi means what? You should sleep and you should awake in the specific time. How many of us are doing? We are not following. Such many missing links are there, which we have neglected, thinking that it is Shastra, it is something which is not science. But to conclude, I want to say that if we list out once again all the Sadvrittas, if we divide them into the different categories, and based on the occupation, based on the age, based on the health issues, if you invoke the God and provoke the people to adopt the Sadvritta, definitely Sadvritta principles, Sadvritta code of conducts can be curative, preventive, promotive, and also the predictive. P4, Pentium P3, we say P4, predictive, preventive, promotive,
way of formula we have through Swathvritta. And I thank my role model, the young and energetic Thangavelu sir, whom I always worship, and really I appreciate his presence and his voice and his concern being a scientist. And my pranams to Agnihotri sir and Kamlesh sir for their wonderful enlightenment, and Sharma sir for once more giving me this opportunity to be with such a luminaries and to increase my knowledge a bit. Thank you, everyone. I'll take a leave. Namaskar. Gurubasavaraj, thank you so much for taking us into chapter by chapter, a few sections that you have highlighted. This is very, very important. I continue with a call that I will put in the chat box, that the depth of knowledge that is there in our texts has not come out into the society. That is within India, and this knowledge must go outside India too. So you have shown us how to drill the depth, go to the depth where this knowledge, line by line, where it sits, and what we can gain from it. I like your, also very much like your very last comment, which is that future health is the basis for future medicine. Health has to be understood, and health has to be understood based on the principles, a wider set of principles, the wider determinants of health. And what is in our old text, you have touched on Ashtanga, you've touched on Charaka Samhita, you've touched on the commentaries, Chakrapani. Within those are very, very clear prescriptions. And hence my comment, I will come back to this, a call for a Swasthya Bharat mission. And even if it is just reciting these messages, just to spread this word, spread this message around India and from India to the world. That itself, you gave the figure of non-communicable diseases and chronic diseases and the high disease load from these problems. Maybe that is the way to somehow convey a deep message to people. I thank you again, Basavaji. My regards to all in SDM HASSAN, particularly your wonderful principal. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. We always look forward to SDM HASSAN for inspiration and your scholarship there, and all of the SDM institutions, Udupi and the other locations in Karnataka. We look forward to your input in this activity and also guiding us into the future. The message you have delivered today is a good example of where we can go. So, namaskar from me. Thank you for joining us today. Namaste, sir. Thank you so much, sir. Now we are moving on to our fourth speaker for the day, and we are moving to the north of India, to Jammu. Poonam ji, namaskar. Poonam ji. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Welcome. Thank you so much. Welcome, welcome, Poonam Gupta ji. Welcome. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. पूनम जी, अगर कैमरा थोड़ा नीचे करो तो रिकॉर्डिंग में सही दिखाई देगा। हाँ बस। Is it okay, sir? बहुत बढ़िया। Thank you for joining us today from Jammu. Thanks a lot, sir. Please continue to inspire us and guide us in our journey as we go along. Floor is all yours, Steve. Namaskar. You have a young person there with you who wants to say hello to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Maybe he or she can show, is it a she or a he? They can show their face to us. We would like to see young generation. Sherry, sir is calling you. Jaldi aa jao. He was waiting for mother's turn to come. Okay. Namaste kar do. Ram ram kar do. Ram ram. Namaste. Okay. Thank you. Poonam ji, all yours. Thank you for joining us. Okay. Unmute kar dijiye ji. सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वप्रवृत्त्याः सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्.
सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर मदन थंगेलू सर, डायरेक्टर IRES, डॉक्टर पवन शर्मा सर, प्रेसिडेंट IRES को उनके 311वें वेबिनार के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं डॉक्टर पवन शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के वेबिनार के लिए उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इतने बड़े प्रवक्ताओं के प्रसिद्ध प्रवक्ताओं के मध्य अपने विचार रख सकूं और अपने मदर इंस्टीट्यूट, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च को आप सब के इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के सामने ला सकूं। धन्यवाद सर। सर, इज माय स्क्रीन विजिबल? Not yet. आपने स्लाइड्स? We can only see your main camera. थोड़ा, I think you are. Okay sir. You might have to select the correct screen from. Okay sir. And I also have a request, Poonam ji. After you have completed, please tell us in 1 or 2 minutes a little more bit about your institute. क्या कुछ चल रहा है आपके वहाँ? Okay sir. बाद में जी. Sir, is it now visible? Is the नहीं जी, slide visible now? नहीं जी. नहीं sir? नहीं जी, नहीं. Okay. Don't worry, if you press the share screen, नीचे वो जो green जो बटन में. क्या बात का? कब शुरुआत आपका? आपका 5 बजे आपके पूरा दिन कल खत्म हो गए। Poonam ji, don't worry. Can you see the share screen नीचे जो बार में? आपके सामने तक है ना, देर तक है ना। If you press this share screen button, and then it will display one window with all the options, all the screens, और उसमें you will have to select, उसमें से you can select जो भी, whichever you want to display. This is a good test. Pressure. Little bit of stress here. आ गया जी, थोड़ा आ गया. चलो. Thank you sir. Thank you. Poonam ji, if you wish, you can also put it in this display mode so that the whole slide is shown. But अगर चाहे तो बिल्कुल नीचे है जी. नीचे where it is written 68%, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है. F5 बटन दबा दीजिए, आ जाएगा. F5 टैब दबाइए, कंप्लीट फुल आ जाएगा. ठीक है सर. ओके सर. The word Sadvrit is made up. हाँ जी सर. आया नहीं पूनम जी, शायद अभी नहीं आ रहा सर. एक बार और करना जी, एस्केप करके, एस्केप दबा के एक बार और. I don't know, अग्निहोत्री जी आ गया. पूनम जी नीचे एक, प्लीज ट्राई अनदर ऑप्शन. नीचे जो 68% लिखा हुआ है जी, बिल्कुल राइट हैंड साइड, उसके नजदीक लेफ्ट में एक बटन है, वो स्क्रीन की सिंबल करके. अगर आप लैपटॉप से प्रेजेंट कर रहे हैं तो F5 टैब दबा दीजिए तो फुल स्क्रीन हो जाएगा. अच्छा सर, अभी भी नहीं आ रहा. डॉक्टर पूनम, F5 दबाइए, F5 टैब दबाइए, फुल स्क्रीन हो जाएगा. सर दबा दिया. रीसेट करिए ना, भाग रहा है अभी. हाँ, अभी चला गया है, स्किप कर गया है.
डबल टच करिए उसको पहले। We can, Agnihotri ji, I can see one एक blank सा screen दिखाई दे रहा है जी। अब नहीं Complete आप बैक आइए, पहले बैक आइए, बैक आ जाइए। सर मैंने पवन सर को किया है, ये स्लाइड शेयर किया है क्या? नहीं हो जाएगा, आप बैक आइए एक बार। आपकी मशीन से ही हो जाएगा जी। ओके सर। और विजय जी, राय जी will help you there, थोड़ा बताना जी कैसे। ओके सर, एस्केप की पहले बटन दबाइए। आप एक बार पहले बैक एस्केप आइए। की। हाँ अच्छा सर। हाँ जी सर। इसको क्लोज करें। हाँ सर रिज्यूम शेयर कर देती हूँ, लेकिन सर अब हो रहा है? नहीं जी, आया नहीं। जी पता सर। नहीं, आप पहले वापस आइए होम स्क्रीन पे अपने। जी, अब ऊपर देखिए स्लाइड शो लिखा हुआ है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर। हाँ, और ऊपर जाइए, स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए। सर उसके ऊपर ये वाले कीज आ गए, म्यूट और स्टॉप वीडियो वाले ना। नहीं दिख रहा है, विजिबल है आपका ऊपर, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो। यस, क्लिक करिए नीचे स्लाइड शो पे। सर एक्चुअली उसके ऊपर ना ये सारे ब्लैक जो भी जूम के है ना सर। नहीं, इसको साइड में कर म्यूट लीजिए, स्टॉप। इसको कर्सर से पकड़ के दूसरी तरफ कर लीजिए, या इसको मिनिमाइज कर लीजिए। पूनम जी अगर चाहे तो प्लीज हाँ जी, कंटिन्यू विद दिस, हाँ। अगर if it is हाँ, इस पे ही convenient। कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत। ठीक है। Okay, sir. The word Sadvrit is made up of two words, Sad and Vrit, where Sad means good or ethical and Vrit means regimen. So, it can be defined as a code of conduct for keeping our body in a balanced state of dosh, dhatu, agni, mal, and keeping our indriyas in a blissful state. So the summarized definition of Sadvrit seems to fulfill the definition of Swasth Purush, that is, some dosha, some dhatu, some agni mal kriya, prasanna atma indriya mana, swasth itvidiyate. Now references of Sadvrit in Brihatrais. Acharya Charak has described Sadvrit in the last chapter of Swasthavritta Chatushk, that is Indriyopkramni Adhyay, Sutrasthan, chapter 8, and Acharya Sushrut has described Sadvrit in Chikitsa Sthan, chapter 24, Anagat Abhag Pratishetya Adhyay, and Acharya Bhagvat in Ashtang Sangreh has described Sadvrit in Sutrasthan, chapter 3, that is Dincharya Adhyay. Now, what is the need of study of Sadvrit? Rapid increase in lifestyle disorders, stressful life, diminishing moral values and ethics, increasing incident rate of mental disorders, negligence towards personal health, increase in criminal and sinful activities has led to the need of study of Sadvrit. Now, Prayojan of Sadvrit. Now, this Prayojanas I have compiled from Brihatrais, Charak Samhita, Sushrut and Bhagavad. These are to attain arogya, longevity, moksha, swargalok after death, protection from Dept against difficulties, good qualities, happy life, victory over indriyas, that is indriya jaya. Now, what are the components of Sadvrit? Dincharya, Ritucharya, and Acharya Sayan can be the components of Sadvrit.
Now, Dincharya. Acharya Charak and Sushruta has described Dincharya, but Acharya Vagbhat, along with describing Dincharya, has also mentioned Ratricharya in the chapter of Dincharya in Sutrasthan. So the components of Dincharya are Brahmahora Jagran, Bhunaman, Ushapan, Shauch, Dantadhavan, Jivani Lekan, Gandush or Kaval, Mukh Prakshalan, Anjan, Nasya, Vyayam, Kshaurkaram, Snan, Vastradharan, Swadhyay, Bhojan. So what is Brahma Muhura Jagran? Getting up early in the morning, 16 kala before sunrise or 2 hours before sunrise is Brahma Muhurat. It is also called Amrit Vela. Bhunaman, that is touching the ground with gratitude, is Bhunaman. Ushapan is the water that is consumed in the morning after getting up is Ushapan. Shoch, getting cleaned after Malutsarg is Shoch. Dantadhavan is cleaning our teeth with the datun like Nimb, Khadir, Madhu, Karanch for removing Durgandh, Virasta from our mouth is Dantadhavan. Jiva Nilakhan is cleaning our tongue with it can be made, Jiva Nilekhni can be made of dhatus like Swarna, Rajat, or it can be made from the twigs of the tree for the purpose of cleaning our oral cavity, for removal of Durgandh, and for the arousal of ruchi in food. Now, next is Gandush or Kaval. Gandush is filling our oral cavity with medicated oils, quat, lukewarm water. It also strengthens the oral cavity, our teeth, gums, strengthen our Hanusandhi, and rouses interest or ruchi in food. Now, next is Mukh Prakshalan, cleaning the eyes and face with cold water. Anjan is applying Anjan. It removes the dosha from our eyes and improves the vision as well. Nasya, as everyone might be well versed with Nasa hi Dwaram Shirso. So Nasya can provide protection against the infection and can enhance and can provide strength to the Indriyas as well. Next is Vyayam. Acharya has described Vyayam according to the Ardh Bal Shakti, that is the since the ललाट स्वेद प्रवृत्ति, जब तक ललाट पे माथे पर स्वेद उत्पन्न नहीं होता तब तक हमें व्यायाम करना चाहिए. नेक्स्ट इज क्षौरकरम, दैट इज कटिंग ऑफ नेल्स, केश एंड क्लीनिंग ऑफ मलायतन every 5th day or 3 times in a paksh. Next is snan. We should take snan according to the daily. We should take snan daily, or rather twice a day, and the water we use for snan should be according to the ritu. For example, in Shishir and Hemant ritu, lukewarm water should be used, and in Grishma and Varsharad ritu, Shital water should be used. Now next is Vastradharan. We should wear daily clean clothes we should wear, and it should not be torn also. Swadhyay is meditation. It should be done at the last prayer of Ratri and in the first prayer of Ratri, and it brings close to us the spiritual power. And last is Bhojan. We should take light and easy to digest food, and it should also be according to the Ashtvid Ahar Visheshaitanani, like Prakriti Karan Sanyog, Rashi Deshkal, Matra Upyog, Sanstha Upyogta. Now, Ritucharya, components of Ritucharya. Acharyas have there are 6 Ritus: Shishir, Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant. Acharyas have explained a specific Ahar and Vihar for each Ritu. Besides, they have also explained Tyajya Ahar and Tyajya Vihar for each Ritu, and we should follow it. Next is Achar Rasayan. Achar Rasayan has been described by Acharya Charak in Chikitsa Sthan, chapter 1. Some regimens or etiquettes that can be used as Rasayan as Achar Rasayan. Satyavadinam akrodam nivrittam matyamadunath ahinsakam anayasam prashantam priyavadinam
जप शोचम परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देव गो ब्राह्मणाचार्य गुरु वृद्ध अर्चने रतम आनृशस्यम परम नित्यम नित्यम करुं वेदिनम सम जागरम स्वप्न नित्यम नित्यम क्षीर घृत आशिनम देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिम अहिंकृतम शस्ताचारम असंकीर्णम मध्याहतम प्रवणेन्द्रियम. These were few components. Here are more about Sadvrit, like many of the few Pravakta has told. Some of you I have compiled here. We should give path to the diseased, females, elderly, or vehicles on the way. We should wear only clean clothes. We should comb our hair daily, putting oil in nose, ear, and massage our feet and head daily. We should be kind to everyone. We should always try to be cheerful. We should never tell a lie. We should never humiliate women. We should respect our elders and gurujans, and we should never be jealous of anyone's progress. Now, what are the benefits of Sadvrit? Sadvrit helps keeping our body healthy both physically and mentally. Sadvrit helps in maintaining Sharirik doshas, that is Vat, Pitta, and Kapha in Samavastha, and bringing Manasik gunas towards equilibrium. Sadvrit also helps in maintaining Dhatu and Agni in Samkriya and in normal amount. Sadvrit also helps in keeping our mind cheerful and calm. Sadvrit can help in keeping Indriyas present and under control. Now, preventive aspect of Sadvrit. Sadvrit plays a vital role in preventing disease. It can be explained with the help of quotation by Acharya Lolim Raj. The quotation is Pathya Sadi Gad Atasya Ki Moshad Nishevne. This is the first part of shloka. कि अगर कोई व्यक्ति पथ्य का सेवन करता है तो उसे औषध सेवन की जरूरत नहीं पड़ती. इसी तरह से it can be used as a simile for proving the preventive aspect of Sadvrit, कि अगर कोई व्यक्ति सद्वृत का पालन करता है तो भी उस व्यक्ति को औषध सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो हमेशा निरोगी रहता है. Now, Sadvrit helps in keeping Indriyas and Man prasanchit and under control, and as such Pragya Prat, which is one of the causes of diseases, can be prevented, and hence disease can be prevented as well. Now the conclusion, what I have concluded is Sadvrit with its components like Dincharya, Ratricharya and Achar Rasayan reduces the stress related disorders, increases Sattva Gun and decreases the health related issues including lifestyle disorders. So in order to live a long life healthy and happily, we must follow Sadvrit by making it a part of daily regimen, and in this way the dharma, calm, moksha can be attained. Thank you. Being with us today from Jammu. Can you hear me, Poonam ji? Thank you so much. Hanji, sir. Thank you, sir. Thank you so much for joining us today. Thank you, sir. Thanks for the cooperation, sir. We look forward to your guidance to stay connected with your wonderful institution in Jammu. You have, what I found very exciting about your institute is that you have put research also on the name of the institution. So we look forward to seeing how we can engage more with your institution and how you can also engage with us in growing this. Thank you, Poonam ji. Thanks a lot, sir. Stop sharing your screen, then we can move to our final speaker for the day, Dr. Ray Namaskari. As I said earlier, this is a lovely journey across India, and Vijay ji is joining us. Vijay ji, Namaskar. Namaste. The floor is yours.
Thank you, I sir. don't want to add any more, but if you say a few words about yourself, your institution, then all of us here will appreciate Okay, it. sir. Okay. Thank you, sir. Thank you for joining us today. Thank you, sir. Thank you for inviting me and your kind words. I feel fortunate that today I'm meeting with the respected Madan ji through this forum. So, प्रणाम करता हूँ आपको और आयुर्वेद के प्रति जो आपका अनुराग है मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। मैं गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित है वहां पर सहायक आचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इस मंच पर गुरु प्रवर मेरे विषय के उदात्त विद्वान आदरणीय अग्निहोत्री सर और आदरणीय कमलेश सर उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरे अग्रज आदरणीय डॉक्टर पवन शर्मा सर जो एक उत्तम संयोजन का कार्य करते हैं ऐसे मंचों पे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और दो ऐसे वक्ता जिन्होंने अपनी इस ज्ञान गंगा में अपनी भूमिका निभाई है उनका भी अभिनंदन, और अभी भी 23 लोग जुड़े हुए हैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। वैसे इस विषय पर अब कुछ बोलने को बचा नहीं है क्योंकि दो ऐसे विद्वान जिनको सुन के, जिनको देख के हम सभी सीखते हैं अभी भी, उनके बाद कुछ भी बोलने को नहीं बचता है। फिर भी एक कंप्लीट जो थाली होती है उसमें अचार की भांति कुछ शब्द चूंकि मुझे आमंत्रित किया गया है तो मैं रखूंगा, बहुत संक्षेप में ही अपनी बात रखूंगा और पुनरावृत्ति की संभावना है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन बहुत ही अचार पूरे भोजन को स्वादिष्ट बना देता है विजय जी। उसके बिना आनंद नहीं है। वेलकम वेलकम। जी जी। सद्वृत्त एक ऐसा विषय है जो आयुर्वेद के विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं और हम सभी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम सुनते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, अमुक चीजें, और लगता है कि ये रोज प्रतिदिन सुनने की चीजें हैं, इनका बहुत कोई महत्व नहीं है। लेकिन इनका महत्व जब कोई आपदा हमारे ऊपर आ जाती है, और ऐसी आपदा जिसका निराकरण पाश्चात्य जगत के पास भी नहीं रहता है और जो आज की विज्ञान है, संपन्न विज्ञान संसाधन संपन्न है, उसके पास भी नहीं रहता है, तो फिर लगता है नहीं इन चीजों का महत्व है। सद्वृत्त के बारे में जैसा अभी डॉक्टर पूनम जी बता रही थी, सदा सज्जनानाम वृत्तम व्यवहार जातम सद्वृत्तम। आचार्यों को निर्देश है कि सदैव ही सज्जन लोगों के आचरण का ही व्यवहार करना चाहिए और वही सद्वृत्त है। सदा वृत्तम अनुष्ठायम देह वांगमम प्रवृत्ति रूपम सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। व्यक्ति को, जैसा अभी पूर्ववर्ती हमारे डॉक्टर साहब गुरुबसराज सर बोल रहे थे कि व्यक्ति को सदैव ही शरीर से, मन से, वचन से इस सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। दो विषय हैं कि सज्जन कौन है जिसका हमें पालन आचरण करना है, तो इसका भी निर्देश है, इसका भी स्पष्टीकरण है। अपने यहाँ आप्त संज्ञा प्राप्त ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है, आदरणीय अग्निहोत्री सर उसको कोट कर रहे थे कि आप्त व्यक्ति वह होता है जिसका आचरण निर्दोष होता है, वह व्यक्ति जो कहता है वो व्यवहार में फलित होता है। ऐसा नहीं कि कोई वो भविष्यवाणी करता है और वो सही हो जाता है, नहीं, इंद्रियों पर उसकी विजय होता है, वो सदैव सत्य ही कहता है, सदैव सत्य का ही पालन करता है। सद मतलब जो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं हो सकता, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, वो जो सर्वथा उपयुक्त है वही सद है, और इस सद का पालन करने वाला व्यक्ति सज्जन है, संत है या आप्त है। ऐसा व्यक्ति जो शौच, शांति आदि से युक्त सदाचारी आचरण और तज्जनित धर्म के प्रभाव से, जो धर्म, अर्थ और काम ये पुरुषार्थ हमारे हैं, इनको निर्विघ्न रूप से संपादित करते हुए अपने जीवन में स्थित रहता है, ऐसे व्यक्ति का आचरण करना है। ऐसा सद्वृत्त का पालन क्यों करना है, क्यों आवश्यक है, क्यों आचार्यों ने इतना इस पे जोर दिया है? तो दो बातें अपने आदरणीय शर्मा सर ने भी बताया है। तस्माद आत्महितम
चिकित्सता सर्वेण सर्वदा स्मृति मास्थायम सद्वृत्तम अनुष्ठेयम तद्वयनुतिष्ठिनम युगपत्पादत्यर्थ द्वयमारोग्यम इंद्रिय विजयम चेति। इस सद्वृत्त के पालन करने से जो विवेकशील पुरुष है, जिसकी स्मृति अच्छी है, जो सद असद का विवेक कर लेता है, उसको दो चीजों का लाभ होता है। प्रथम तो आरोग्य, दूसरा इंद्रिय विजय। प्रथम आरोग्य नाम लिया है, लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर दूं, बिना इंद्रिय विजय के यह आरोग्य संभव नहीं है। तो प्रथम जो महत्व का विषय है वहां ये इंद्रिय विजय है। और चूंकि हम स्वस्थ वृत्त के विद्यार्थी हैं, अग्निहोत्री सर हैं यहाँ पे, इंद्रिय विजय भी बहुत आसान नहीं है। इंद्रिय विजय होते ही हम मोक्ष के रास्ते पे जाने लगते हैं, उसके लिए यम नियम का हमारे यहाँ वर्णन है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो समाज में रहता है, वो उस कठिन मार्ग पे नहीं आ सकता। तो सिर्फ उस दो यम और नियम जो अष्टांग योग के हैं, उनका ही सरल स्वरूप जो हमारे माँ बाप, हमारा समाज संस्कारों में देता है, ताकि हम अच्छा आचरण कर सकें। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसा आचरण जिससे उसका स्वास्थ्य बना रहे, खास करके जो मेंटल हाइजीन है, और ऐसा व्यक्ति जिसका उत्तम मानसिक स्वास्थ्य है, ऐसा व्यक्ति जिसका उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य है और जिसके अंदर सज्जनों का गुण है, ऐसा व्यक्ति समाज को भी सज्जन बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। और ऐसे समाज में रहने वाले पुरुषों के कारण वह राष्ट्र भी उत्तम मानसिक स्वास्थ्य वाला बनता है, उत्तम स्वास्थ्य वाला बनता है। इसलिए यह सद्वृत्त स्वस्थ समाज मूलक व्यवहार है, आचरण है। जैसा अभी सर मदन सर कह रहे थे कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, ये सद्वृत्त उसका मूल हो सकता है। और यह सद्वृत्त किताबों की लिखी बातें नहीं है, हमारे परिवार में संस्कार दिए जाते हैं। कहा जाता है कि मुंह पे जब आपको याइन हो रही हो तो मुंह को ढकना चाहिए, माँ बताती है। कानों को खोदना नहीं चाहिए, नाक में उंगली नहीं करनी चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए। ये संस्कार घर में दिए जाते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इनका पालन करने से बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को हम अच्छा कर सकते हैं। और देश में जो सबसे बड़ा वर्डन है आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, वो हम अपने रहन सहन, खान पान और आदतों में सुधार करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा सरकारी खर्च उस पर होता है और इरिवर्सिबल है ये डिजीजेस, तीर पे तुक्का ये है। कम्युनिकेबल डिजीजेस तो वैक्सीन है और सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनके भी मूल में यह सद्वृत्त में जो करणीय और अकरणीय भी बहुत डिटेल अभी रखा गया था अपने सामने कि क्या करना चाहिए, क्या डूज क्या डोंट्स हैं। तो उसमें जो अकरणीय हैं उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में, आधुनिक रहन सहन में, आधुनिक जो हमारी संस्कृति है उसमें हम विवेकहीन होते जा रहे हैं और हमारा जो सोचने विचारने की क्षमता है वो स्वास्थ्य परक नहीं है, एकदम अस्वास्थ्य परक है। तो हम अस्वास्थ्य परक जब विचार रखते हैं, अस्वास्थ्य परक व्यवहार करते हैं, तो उसका रिजल्ट किसके ऊपर आएगा? अपने शरीर के ऊपर आता है। दो तीन एग्जाम्पल के मैं रखूंगा बहुत संक्षेप में ही। ब्रह्मचर्य की बात हिंदुस्तान में होती है, अग्निहोत्री सर ने कहा था। तो ब्रह्मचर्य कहने पे या ब्रह्मचर्य की बात करने पे लगता था नागा साधु, संत, सन्यासी। नहीं, आचार्य वाघभट्ट ने ब्रह्मचर्य को अब्रह्मचर्य कहा है। अपनी भार्या के साथ, जैसा सर बता रहे थे, अपनी पत्नी के साथ, अपने समाज को चलाने के लिए, अपने समाज को एक प्रतिनिधि देने के लिए अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करना, यही ब्रह्मचर्य है और यही अब्रह्मचर्य है। लेकिन जब हम स्वच्छंद हो जाते हैं तब हमारे सामने एड्स जैसी बीमारियां आती हैं जो लाइलाज होती हैं। ये क्या है? ये इंद्रिय जय है। हमारी जो काम इंद्रिय है वो बहुत प्रबल है, अपने विषयों में बहुत तेजी से प्रवृत्त होती है। लेकिन हमारे घरों में ये संस्कार दिया जाता है कि हम जब ये आश्रम की परंपरा में रहते हैं तो हमें ब्रह्मचारी रहना है। एक शादी की वय है, जब हम गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं, हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, वहां पे अब्रह्मचर्य का कंसेप्ट जो वाघभट्ट ने दिया है वो लागू होता है। ऐसे ही अभी बात आई, अभी मास्क का बहुत प्रचलन है।
आचार्य सुश्रुत ने अपने अनागत बाधा प्रतिशय अध्याय में और बाद में भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में भी बहुत स्पष्ट निर्देश किया है कि जब भी आप समूह में रहते हैं, जब भी लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको हंसना, खांसना, छींकना बिना मुख आवरण के नहीं करना है। मुख को आवृत करना है, चाहे वस्त्र से करिए, हाथ से करिए, मुखावरण करना है। हम लोग दिनचर्या में सुबह उठते ही दातून से लेके और रात्रि पर्यंत तक जितनी भी चर्याएं हैं, सुनने में लगती हैं कि दातून करना, दातून तो रोज रोज ही करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर कोई व्यक्ति नियमित बक्कल हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है। तो ये चीजें कहने में, सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनचर्या के बारे में अपनी एक सहयोगी अमेरिका में ही हैं, बंगाल से बिलोंग करती हैं, पवन सर जानते होंगे, वो दिनचर्या इंस्टीट्यूट नाम से एक संस्थान चलाती हैं और कभी यहाँ आती हैं तो बताती हैं कि कस्टमाइज जो उनके डेली रेजिमेंट के लिए जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो 6-6 महीने के क्यू में लोग रहते हैं, सिर्फ वहां के हिसाब से उनकी दिनचर्या शेड्यूल करने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए। इसी प्रकार से स्वच्छ जल पीना, जूतों का प्रयोग करना, समय से सोना, समय से उठना, ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस तो है, और इनकी इंपॉर्टेंस आज नहीं पहले से है। हमारे यहाँ दिनचर्या में सारी चीजें बताई गई हैं। इसी प्रकार से आचार रसायन का भी डॉक्टर पूनम बता रही थी, सिर्फ हम इन सदवृत्त का पालन करते हैं अगर, तो जैसे कोई औषधि का प्रयोग शरीर में होता हो और उससे हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, इम्यूनिटी गेन करते हैं, स्किन की लक्षण हमें अच्छी मिल जाती है, हमारी आयु बढ़ जाती है, ये सारे जो औषधियों से लाभ होते हैं वो सिर्फ एक सदवृत्त के पालन करने से मिलने लगते हैं। और इनको इतना महत्व दिया आचार्य चरक ने कि अपने चिकित्सा अध्याय में इसको पहले ही शुरू में रखा है। तो इसके पीछे तो कितना महत्व है हम समझ सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मोटी मोटी बातें यहां रख रहा हूं। अब ये सदवृत्त के बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, सामाजिक सदवृत्त, बहुत सारे आयाम है, मानसिक सदवृत्त, वैवाहिक सदवृत्त, पठनीय, रास्ते का सदवृत्त। लेकिन आचार्य चरक ने अग्रय द्रव्यों का जहां वर्णन किया है, अग्रय द्रव्य मतलब ऐसे श्रेष्ठ भाव या ऐसे श्रेष्ठ द्रव्य, वो उस फील्ड के सबसे उत्तम है। और ये जो अग्रय द्रव्य होते हैं या अग्रय भाव हैं, वो विकारों को समन करने में समर्थ होते हैं। उनमें कुछ सदवृत्त के संबंध में भी वर्णित हैं और वो सदवृत्त के मोटे सिद्धांतों के रूप में उनको लिया जा सकता है। जैसे आचार्य ने कहा है कि सदजन अनुष्ठेया नाम, जो सदवृत्त की परिभाषा है, जो सज्जन लोग हैं उनके आचरण का अनुष्ठान करना चाहिए। यह आचरण के मामले में सर्वोत्तम भाव है। हर्ष प्रीणनम, शरीर का पोषण करने में, शरीर को तृप्त करने में आनंद से ज्यादा महत्व की कोई चीज नहीं है। शोक शोषणानम, शरीर को शोषित करने में, कमजोर करने में, जीर्ण करने में शोक से बड़ी कोई चीज नहीं। असद ग्रहणम सर्व अहितानाम, असद का ग्रहण, जो सद नहीं है उसका ग्रहण करना सबसे बड़ा अहित होता है। निवृत्ति पुष्टिकरणानाम, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, उनकी अगर सफलतापूर्वक हम निवृत्ति करते चलें तो यह पुष्टि करने वाले भाव में सर्वश्रेष्ठ है। लौल्यम क्लेश करना नाम, यहां इंद्रिय विजय की बात हो रही थी। लौल्यम इच्छा, तृष्णा, कामना, यह क्लेश करने अर्थात दुख देने वालों में सर्वोत्कृष्ट भाव है। विषादो रोग वर्धना नाम, अगर आप विषादग्रस्त हैं, आनंदित नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, रोगों को बढ़ाने में यह सर्वोत्कृष्ट भाव है। इसी तरीके से अगर हम सदवृत्त का पालन, और हमारे यहाँ तो ये अवधारणा बहुत प्राचीन समय से रही है कि हम सिर्फ अपने नहीं,
हम सिर्फ अपने समाज, अपने राष्ट्र की नहीं, हम तो पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। ये सद्वृत्त का ही संस्कार है। सद्वृत्त के संबंध में कुछ सूचक शब्द हैं सद्वृत्त की दृढ़ता के लिए, मैं उनको भी यहां कोट करना चाहूंगा और बहुत ही उपयोगी हैं। मैत्री सबधि समम कुर्यात् स्नेहम सत्सु तु सर्वदा संसर्ग साधु भी कुर्यात् सत्संग परिच्यते। कोई व्यक्ति सद्वृत्त में अगर दृढ़ रहना चाहता है तो सज्जनों के साथ मैत्री, सब प्रकार से उनके साथ मैत्री का प्रयास करना चाहिए। सज्जनों से ही हर प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए और असज्जन व्यक्ति की संगत से दूर रहना चाहिए। व्यसनी के साथ संसर्ग करेंगे आपको व्यसन मिलेगा, सज्जन के साथ आप संसर्ग करेंगे आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा। इसी तरीके से अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट कहते हैं, काले हितम मितम ब्रूयाद विषमवादी पेशलम पूर्वाभिलाषी सुमुख सुशीला करुणामृति। अभी जो शर्मा सर कह रहे थे, पूर्वाभिलाषी, समय के अनुकूल, हितकारी, जितनी आवश्यकता है उतना, सत्य बोलिए, मधुर वचन बोलिए, सामने आए व्यक्ति से प्रसन्न होकर करुणा और शालीनता से सर्वप्रथम स्वयं ही उसका हालचाल पूछिए। ये आपको भी आनंदित करेगा, अगले वाले को भी आनंदित करेगा। और जो अभी तनाव, ईर्ष्या, चिंता, शोक, इनसे जो मानसिक अवसाद की स्थिति है और मन के प्रभावों का शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है और व्याधियों का समूह होता जा रहा है यह शरीर, इनसे हम निवृत्ति इस तरीके से पा सकते हैं। इसी तरीके से इसके उपसंहार में अगर हम रखना चाहें तो कुछ सूत्र है। ब्रह्मचर्य, ज्ञान दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, उपेक्षा, प्रसम परस्य स्मादिति। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा व शांति, इन क्रियाओं में सदैव तत्पर रहने चाहिए। सिर्फ इन्हीं क्रियाओं में अगर व्यक्ति तत्पर है और अपनी जिम्मेदारी के साथ इनका आचरण कर रहा है तो पूरे सद्वृत्त का वह पालन करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो हमें सद्वृत्त को अपने परिवारों में, अपनी संततियों में रोपना होगा पुनः, तभी हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर पाएंगे। हम चिकित्सा संसाधनों में वृद्धि कर लें, नए अस्पताल खोल लें, नए अनुसंधान कर लें, व्याधियां आती रहेंगी और बड़ी व्याधियां आती रहेंगी। तो सद्वृत्त का अगर हम पालन करना शुरू कर लें तो यही स्वस्थ भारत की परिकल्पना में उपयोगी होगा। एकमात्र यही चीज जिसमें ना बहुत पैसा लगना है, ना बहुत संसाधन जुटाने हैं, हमें सिर्फ संस्कार देने हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, ये हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए सही है, ये हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। अगर हम अच्छा समाज, स्वस्थ समाज, विवेकशील समाज, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य वाला समाज, उत्तम शारीरिक समाज वाला स्वास्थ्य तैयार करते हैं तो एक उत्तम राष्ट्र का हम निर्माण कर सकते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ होगा। आज के लिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे ऐसे विद्वत सभा में अवसर दिया आप सभी ने, मैं फिर से पुनः बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ डॉक्टर शर्मा सर को, और डॉक्टर मदन सर के साथ यहाँ बैठने का अवसर मिला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी गुरुओं का प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स पर प्रकाश डाला, जो बड़ी बातों में बड़ी गंभीर बातें कह गया। एक्सीलेंट, बहुत खूब। थैंक यू मदन सर। राय जी, हमारी तरफ से एक ही निवेदन है कि हम आप लोगों के साथ काशी में आके रह के थोड़ा हमारी हिंदी संस्कृत हम थोड़ा ठीक करें। So that is my major wish कि आप लोगों के साथ थोड़ा रह के थोड़ा और करें हमारी हिंदी। काफी साल आइए सर, वाराणसी प्रवास पे आइए आप। थैंक यू। हमें पवन जी, आई एम जस्ट टेकिंग योर परमिशन, थोड़ा सा हमारी पूनम जी का इंस्टीट्यूट के बारे में जो हमने बताया कि रिसर्च चल रहा है यहाँ, और अगर स्क्रीन शेयर करें थोड़ा सा, फिर उसके बाद आई वांट टू स्टार्ट आवर discussion because so many wonderful people are here with us. Or to start the discussion, I wish to invite Professor Vineet Sharma ji from Delhi.
तो उससे पहले I just want to quickly show पूनम जी की जम्मू में क्या चल रहा है इनकी इंस्टीट्यूट और इतनी वंडरफुल चीज छोटी छोटी इसमें रिसर्च चल रहा. पवन जी please tell me if my screen is sharing. नहीं तो एक बार और let me start again. No, not share, sir. INI जी. चलो एक मिनट. This is इनकी पूनम जी की कॉलेज में what is happening there and पवन जी आ गया कि नहीं स्क्रीन? Yes, sir. आ गया, चलो. Thank you. So this is a list of उनकी Jammu Institute Ayurveda and Research. ये देखो इतनी they have made a bold statement कि Ayurveda and Research. अब I'm looking at the research section यहाँ. अब इसके अंदर काफी चीज, so many important areas. ये देखो insomnia और जो उस दिन अग्निहोत्री जी कह रहा था कि sleep and hypertension की connection. और ये देखो नस्य, some rasayanas, Ayurveda dietetics. These are world-class projects. Clinical approach to ginger, anti-inflammatory herbs. So many important projects. I put this, I highlight this, क्योंकि at least a few people will be inspired to look at this website, Jammu Institute Ayurveda Research website. अब ये this is an important point. हमारी बातचीत चल रही जी यहाँ इटली वालों के साथ. इटली में there is a lot of older people. When we look at the demographics, there are a lot of old people. Or the most terrible, simple, but the most terrible thing is GI tract, gastrointestinal tract health. अब ये देखो जम्मू में काम चल रहा. It is so wonderful to see all of this happening and the global opportunities that are there. There will be similar research in other parts, in beautiful parts. I'm highlighting the beautiful parts of India, Uttarakhand being one, where we can set up large international collaborations. Clinical evaluation of Tulsi in oral submucous fibrosis. So these are all important areas where I just highlighted this क्योंकि हो सकता बाहर से there are some people looking at this and understanding, at least inspired to look at what is happening in Jammu. And it is also a request for all of us to have web pages where some of these points are highlighted. So with those few words, I want to start our discussion. I put one choti si point there. Why not we request for a Swasthya Bharat? That is my phrase. Rai Saab can correct this and improve on it. मगर हमारी तरफ से ये पहली सोच जो आया कि स्वच्छ भारत तो हो गया, आत्मनिर्भर भारत भी हो गया, पूरा देश वाली मिशन, क्यों नहीं स्वस्थ भारत या कुछ और इस तरह. So for this, before I do that, I thank all the wonderful speakers, starting with Kamlesh ji and ending with Rai ji. Thank you so much for inspiring us today. Choti choti baaton se kaise, how we can improve the quality of health. This is very, very important for Hindustan, not only Hindustan, particularly for Hindustan, but also for the rest of the world. And if Hindustan can take a leadership role there, then we are taking a leadership role across the world. And simple, how we can codify what is in our textbook. Yahan pe ji, Vijay ji, yahan bahar, people don't even know ki kya hai hamari samhita, kya hai tikaएं. That is not known for people. Or they can't read Sanskrit, they cannot read Hindi, and they are at a disadvantage. So we are hoping that with guidance from knowledgeable people like you in established institutions in Kashi, we can start to promote these things. So with those few words, I would like to invite Professor Vinod Sharma ji from Delhi. I'm assuming Vinod ji is still here with us.
Guruji, if you are here with us, please. Oh, Vinodji is here. Vinodji, namaskar, pranam ji, pranam. हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आज आपने सदवृत्त पे बहुत अच्छी चर्चा करवाई, बहुत आनंदानुभूति हुई कि क्योंकि कल बात चल रही थी आयुर्वेद और ज्योतिष की, तो कहा कि ज्योतिष आयुर्वेद और ज्योतिष जो है वो निरंतर एक साथ होते हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथ मैंने बहुत से देखे हैं, कुमार भृत्यम की कल मैंने बात की थी, वो सारे जो ग्रंथ हैं वो ज्योतिष का ही अनुकरण और अनुसरण करते हैं। क्योंकि ज्योतिष कब जो है मेडिसिन बनानी है, सदवृत्त को बनाने के लिए कब मेडिसिन बनानी है, कब जो है वो देनी है, यहाँ तक कि ज्योतिष तो ये बतलाता है कि किस रोगी के लिए उपयोगी ये वैद्य होंगे या नहीं होंगे, इनके लिए अस्पताल बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से कहते हैं कि पति और पत्नी के लिए वैवाहिक जीवन मंगलमय की कामना से मिलान किया जाता है, मिलाप किया जाता है, उसी प्रकार रोगी और डॉक्टर का, वैद्य का भी आपस में मिलान किया जाता है। क्या ये रोगी जो है उसके लिए उपयुक्त होगा, रोगी के लिए ये वैद्य उपयुक्त हो गए या नहीं होंगे, ये अस्पताल जो है, ये जो औषधालय है ये उपयुक्त होगा ये नहीं होगा। तो कल मैं कह रहा था कि प्रत्येक दृष्टि से, मुहूर्त की दृष्टि से हम कहें तो, जैसे मैंने तो कहा कि स्वर की बात की थी, नाड़ियों की बात की थी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, मध्य नाड़ी, ये सारी नाड़ियां जो है स्वर शास्त्र से तो हम ये बतला देते हैं कि कब किस स्वर, कौन सा स्वर जो है वो चल रहा हो तब हमें घर से निकलना चाहिए किस कार्य के लिए, कब जो है हम किस कार्य के लिए किस स्वर में पहुंचना चाहिए, किस स्वर में बात करनी चाहिए, किस स्वर। तो कहा कि स्वर ही ये बतला देता है कि आप, जैसे हमें युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो किस मुहूर्त में हमें हमें आक्रमण करना चाहिए शत्रु के ऊपर। यदि हमें न्यायालय में और कोर्ट में अपनी विजय प्राप्त करनी है तो हमें किस दिन, किस तिथि को, किस नक्षत्र में अपना जो है वो कोर्ट में केस जो है वो करना, फाइल करना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे सिद्धांत सर कह रहे थे अभी राय जी को कि हमें हिंदी सिखा दीजिए, तो मुझे लगता कि आप तो इतनी प्यारी हिंदी बोलते हैं कि मुझे आनंद आ जाता है कि एक इतनी जिज्ञासा और पिपासा नहीं, यदि आप हिंदी नहीं जानते होते तो आप 3 घंटे नहीं बैठ सकते थे, बोर हो जाते। और कल आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है मैं उससे अभिभूत हूँ। उसके पास, मेरे पास कोई वर्णनीय शब्द नहीं है, शब्दों का अभाव है, लेकिन आप यदि नहीं समझते तो आप बोलते पता नहीं क्या। अभी जैसे राय जी ने बोला और आप कितने प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा विजय राय जी ने, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण का ढंग इनका बहुत ही प्रशंसनीय था और आपने उसको सराहा। और बहुत, क्योंकि हर चीज का प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, एक प्रस्तुतिकरण का एक तरीका होता है। क्योंकि कुछ विद्वानों को ज्ञान है लेकिन वो अपने ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो 2 कलाएं हैं, क्योंकि गुरु ग्रह हमें ज्ञान देता है और बुध ग्रह है उसका प्रचार और प्रसार के साधन की बौद्धिक विकास और वाणी को व्यक्त करता है। तो कहा कि बुध और गुरु जो हैं वो यही ज्योतिष ये भी बतला देगा कि कौन अच्छा व्याख्याता हो सकता है, कौन अच्छा भागवत वक्ता हो सकता है, कौन अच्छा वकील हो सकता है, कौन अच्छा हमारे मदन जी की तरह सर्वोच्च होते हुए भी मद ना, जिसमें बिल्कुल भी मद ना हो। क्योंकि हमारे भारतीय शब्द जो है, प्रत्येक शब्द जो है अपना अर्थ अपने आप ही बतला देता है। जैसे मुझे तो कोई भी फोन आता तो कहते हैं लोग कि रोज फोन आ जाते हैं कि लोन लो, लोन चाहिए आपके लिए, इतना सैंक्शन है फ्री। मैंने कहा इसमें 2 अक्षर हैं, लो ना, अर्थात इसको ना लो तो ही बेहतरी है, लो ना। कोई कहते हैं कि आप राम जी को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम कोई व्यक्ति
मैं कहा राम सामान्य नहीं थे, कोई भी राम, जैसे आज हमारी इस संगोष्ठी में हमारे मदन जी राम का मर्यादा में है, राम के रूप में प्रस्तुत हैं, क्योंकि राम वो है जो राम ने राष्ट्र माम ने मंगल, जो राष्ट्र के मंगल करने के कार्यों में संलग्न हो और उसमें सक्षम हो और समर्थ हो। तो प्रत्येक शब्द जो है हमारा, तो मैं तो एक अपना कल पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा बोलते हैं और साल में बड़ी श्रेष्ठ पूर्णिमा होती है, और मैं अपने को आपसे उस दिन बहुत आशीर्वाद पाकर, और आज गुरुवार है, विनोद जी आपका आवाज कट गया है। जी सर, जी सर, म्यूट हो गया। डोंट वरी। और जी नेक्स्ट। पवन जी, आई वांट टू, जयेश जी सेंड वन एक मैसेज कि हमारे साथ है सुरेंद्र शर्मा जी, बट आई कैन नॉट। जयेश जी is Dr. Surendra Chaudhary ji has joined, but I think network issue is there. Acha ji, Once again, he got disconnected. If he joins, I will let you know. Yes, thank you, thank you, thank you. I want to introduce, I can see one new person who has joined our list here. Is from, I know Vaishna. Vaishna, Namaskar. Vaishna is a young MD student from Kottakkal Ayurveda Shala, Ayurveda College. Vaishna, can you hear us? Yes, yes. Vaishna studied. Vaishna is a very young MD student, and she is working on using Udvartan for some aspects of. She wanted to do a study on stroke, but now she's doing on. Vaishna, thank you for joining us. Please say hello to everybody very swiftly. Yes. Thank you. Can you, I don't know if you can put your camera on so that they can all see you also. I'm very. Yeah, I'm at the hospital right now. So Okay, you are in the hospital. Yeah, thank you for connecting from Kottakkal Ayurveda College. It's a real please, in a few words, please tell us a little bit about your MD project. Yes, it's on diabetic peripheral neuropathy, and it's a comparative trial. In one group, we are using Udvartana, just churna, Kolavalatadi churna is being used, and in another group, we are mixing it with Dhanyamla and doing the Udvartana, kind of Udgarshanam kind of procedure. Thank you. Here, thank you, Vaishna. Thank you so much for joining us today from Kerala. We have done a good country tour, finishing with Raiji in Kashi, and now I'm so happy that you have at least one person has joined today from Kerala. Thank you, Vaishna. You have nicely, very swiftly introduced your research project on peripheral neuropathy and how. So you can see some of the work that is going on in Jammu, some work that is going on in the far south of India, in the prestigious institution, Kottakkal Ayurveda Shala and their college. Thank you, Vaishna. I want to share this floor with Kamlesh ji. Kamlesh ji, you started the discussion. You touched on very, very important points. I just want आपसे थोड़ा सा feedback लें जी कि आज की जो presentations के ऊपर, did it come up to your expectation? Did we touch on all your points? और एक चीज और जी, ये जो हमने जो बताया कि एक पूरा national mission होनी चाहिए, जिससे जो the deep knowledge that all our presenters have touched on, that Gurubasavaraj ji from HASSAN and Ray ji from Kashi and all these people, there is a lot of information, choti cheez, jisse we can get that very rich concept, ek bahut rich concept, Indriya Vijay, ye dekho, itni so amazing concept. Or Rigved mein, there is a prayer to give us good health for 100 springs where our Indriyas should be in good order. And that is a good way to start this whole discussion. Kamlesh ji, Namaskar ji. Just a quick feedback from yourself कि आज कहाँ तक हमारी
इस वेबिनार में मुझे जैसा आदेश हुआ था, मैंने कोशिश ये की कि मैं सिर्फ रेखा चित्र बनाऊं, रंग भरने का काम मेरे बाकी वक्ता साथी करें, और उस काम को उन्होंने बखूबी किया है। जो आउटलाइंस मैंने बनाई थी, उन आउटलाइंस को उन्होंने फिलअप किया, बसवराज जी ने किया, उसके बाद पूजा जी आई, और पूजा जी के बाद अभी विजय जी ने किया है काम। इस सब के उपरांत भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हम बहुत डीप तक नहीं पहुंच पाए, यानी बहुत से ऐसे अनछुए विषय अभी भी रह गए हैं जिन तक पहुंच बनाना जरूरी है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि केवल एक चैप्टर में ये सीमित नहीं है, आचार्य को जहां भी कहीं अवसर मिला उन सब बातों को उन्होंने कहीं न कहीं किसी न रूप में किसी बहाने से उन्होंने व्यक्त किया, कह दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस चैप्टर विशेष में केवल न जा करके जहां कहीं रोग के हेतु जहां बताए वहां उन्होंने उपदेश दे दिया, कहीं पूर्व रूप बताए वहां उसका उन्होंने संकेत कर दिया। तो ऐसे सब चीजों को मुझे लगता है एक बार हम कंपाइल करके उनको क्लासिफाइड करें, जैसा प्रारंभ में मैंने किया, और जितने उपवर्गीकरण हो सकते हैं उनको मुझसे वर्गीकृत करें, और एक बार समाज के सामने, मतलब पूरी वर्ल्ड के सामने, कम्युनिटी के सामने हम निकाल कर रखें कि ये हमारी वर्थ है, ये हमारी एक शक्ति है। और सामान्यतः चिकित्सक वर्ग जो चिकित्सा कर रहे हैं सीधे सीधे, वो मेरा अनुभव भी मैं साझा करता हूँ कि जब हम किसी रोगी को ये बताते हैं और उसमें प्रेस्क्रिप्शन में डूज और डोंट्स को लिखता हूँ, तो उनको लगता है कि दवा से क्या साथ साथ ये भी, तो उनको बताता हूँ कि दवा से पहले ये इन डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रात में जगना नहीं, दिन में सोना नहीं, ये लिख कर देता हूँ, तो उनको लगता है कि हाँ वाकई ऐसा है क्या। तो एक एग्जाम्पल मैंने निवेदन किया है। तो ऐसी बहुत सी बातें जहां कहीं भी जिस किसी भी संहिता में, ये केवल संहिता काल में नहीं, यानी संकलन काल में आने तक भी 18वीं 19वीं शताब्दी तक भी जिस साहित्य का निर्माण हुआ है, उन विद्वानों के अनुभवों का लाभ लेते हुए, जैसा कहें भी कि योग रत्नाकर और भाव प्रकाशकार ने संहिताओं से भी आगे जाकर दिनचर्या प्रकरण में बहुत से विषय जोड़े नए। तो ऐसे ही इस सद्वृत्त के संदर्भ संबंध में भी जितने संदर्भ हमको मिलते हैं, इनको हम एक बार ठीक से कंपाइल करें और एक वर्गीकृत करके सबके सामने रखें। ये जैसा बसवराज जी ने संकेत भी किया था कि वर्गीकरण करने में हम इंडिविजुअली हो सकता है, सोशियली हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से हो सकता है, उसको आगे जाकर हम अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, कि किस किस के ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम क्या क्या सद्वृत्त का आदेश दे सकते हैं, क्या हम उसको परामर्श दे सकते हैं। ऐसा काम बहुत करना बाकी है। और एक ये जो पहल हुई है, एक शुभ शुभारंभ है, शुभ शुरुआत है ये, इस नाते बड़ी टीम इस नाते लग सकती है। स्वस्थव्रत में देश भर के जो समूह हैं, लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम उसको इनिशिएट करके इसको इस प्रकार सामने ला सकते हैं। ये जरूर हो सकता है, जैसे मैंने अपने व्याख्यान में निवेदन भी किया था, कि उनको समसामयिक संदर्भों में हमको लाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे मलायन शोधलिंग उन्होंने कहा कि मिट्टी के ढेले का प्रयोग करना चाहिए, उस समय वही व्यवस्था थी, आज वो संभव नहीं है। तो जो कालबाह्य है, कालातीत हैं, जो आज के समय में उपयुक्त नहीं है, उनको हम एडिट करें, जो समय के हिसाब से कुछ नई चीजें उनको नए संदर्भों में उनको जो व्याख्यायित कर सकें वो करें। इतना काम मुझे लगता है किए जाने की जरूरत है। और ये जो आज का वेबिनार है, इस नाते से एक तरह से बीज वपन का काम करेगा ये, और आगे जाकर बहुत लोगों को जिन्होंने श्रोता के रूप में आ रहे हैं उनको भी एक दृष्टि मिलेगी जीवन की, एक काम करने का एक मार्ग मिलेगा। ऐसा हम कर पाएंगे तो केवल आयुर्वेद के लिए नहीं, कि हम अपने लिए नहीं, हम संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, जो सबसे पहले वो अनौपचारिक चर्चाओं में आपने संकेत किया था कि वो सारे संसार के स्वास्थ्य की कामना हम करें, तो केवल कामना नहीं, उसके लिए कुछ क्रिया रूप ऐसा हम करके संसार के सामने रखें, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू। यू हैव हाइलाइटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिफोर हमारे साथ है जी, सम न्यू पीपल आर हियर हमारे साथ। एक है सुनीता जी। सुनीता जी नमस्कार। सुनीता जी नमस्कार। If Sunita ji is not available, I want a few words from our senior professor in Sudhakar Reddy ji. Sudhakar ji namaskar. Sudhakar ji namaskar. No, Sudhakar ji is also listening, but Vijay ji, Ray ji, आपने एक you gave one, आपने you alluded to एक example कि कलकत्ता में कोई है, कोई जिसके पास लाइफस्टाइल के लिए जो लोग बाग जाते हैं, थोड़ा बताना जी, थोड़ा और हमारी जी इसके बारे में। सर एक मैडम है
अच्छा डॉक्टर भास्वती जी। अच्छा ठीक है। वो बंगाल से उन्होंने ग्रेजुएशन किया अच्छा और बाद में बीएचयू से उन्होंने एमडी की है। अच्छा। तो वो यूएस में एक दिनचर्या एवरीडे आयुर्वेद करके है जी किताब इनका। जी जी। तो वो एक दिनचर्या इंस्टीट्यूट करके उनकी एक कंसल्टेंसी की क्लिनिक है। हाँ, तो मैं उनके बारे में बता रहा था। तो उनको उनसे कई बार मिलना हुआ यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे कैसे दिनचर्या पे किस तरीके से वो काम करते हैं वो हम लोग के साथ वो शेयर कर रही थी और बताती हैं कि वहाँ के लोग इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के हिसाब से हमारी क्या दिनचर्या हो सकती है जिससे हम स्वस्थ बने रहें। विजय जी, आपके अगर संपर्क में हो तो अपने इस मंच पर कभी आकर के अपने अनुभव साझा करें। हाँ, तो सबके लिए उपयोगी हो सकता है। आप हम पवन जी से भी अनुरोध करेंगे कि मेरे संपर्क में है सब, मेरे संपर्क में पवन सर के संपर्क में होंगी और प्रयास जी, करेंगे वो आ जाएंगे। जी 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 सर, प्रणाम। आई वांटेड जो आपने राय जी आपने जो बताया चीज कि देश और काल की अनुसार कि कैसे हाउ टू इन्फॉर्म पीपल कि यू नो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे भी बहुत बायोलॉजी ड्रिवन हेल्थ साइंस पड़ा है जी, वो उनको समझ नहीं आ रहा। और आई जस्ट वांट टू इनवाइट हमारी वैद साहब है राजन जी पटांगर जी मुंबई से। एंड राजन जी की इज ऑलवेज हमारी बातचीतों में राजन जी ये कहता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द लैंड एंड द क्लाइमेट। एंड हमारे साथ है हरीश जी फ्रॉम कनाडा, ही इज नॉट हियर टुडे विद अस बट आई थिंक राजन जी नमस्कार। नमस्कार 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 राजन जी। हाँ यस, मेरे जो मन में था वो आप ही ने कह दिया कि देश काल और प्रकृति और वहाँ का जो पथ्य है तो वो अगर वो हिसाब से हम समझाएंगे तो सद्वृत्त का पालन अच्छी तरह से हो सकता है। जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि पथ्य को जो वो महत्व उन्होंने बताया, तो मैं मेरे हर एक पेशेंट को भी दवा से भी ऐसे कहता हूं कि ये जो पथ्य का जो चार्ट है उसका लैमिनेट करके वो घर में लगा के रखो, क्योंकि दवा जो है वो हमें जिंदगी भर नहीं लेनी है, पर पथ्य का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही है। और अभी जैसा विजय जी ने कहा कि भास्वती जैसे, क्योंकि उनके साथ मेरा भी परिचय है और बहुत बार बात भी हो चुकी है मदन जी के साथ में, और हम दोनों ने भी बहुत अच्छी तरह से उनके साथ इंटरेक्शन किया था। तो परसों के वेबिनार में एक जो बम्बई के जो प्रसिद्ध कानिटकर शास्त्री थे, तो वो पहले पेशेंट देखने के बाद उसको 15 दिन बोलते थे कि पहले पथ्य जो लिख करके दे रहा हूँ वो फॉलो करो, और जैसे आयुर्वेद के हिसाब से वो फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ व्याधि है तो उसके लिए मैं बाद में दवा दूंगा। तो पेशेंट उनको पूछते थे कि 15 दिन आप कैसे समझ पाएंगे कि हमने सचमुच वो किया है क्या नहीं किया है। तो ऐसा कहते थे कि जबान मतलब टंग जो है सिर्फ वो देख करके मैं बता सकता हूँ कि आपने सचमुच वो फॉलो किया है कि नहीं है। मतलब उनका जो जिह्वा परीक्षण था वो बहुत ही सुंदर था। तो उनका जो बेटा है वो परसों के वेबिनार में उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आज का लेक्चर मतलब आज का जो ये था सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे थे और हर एक का प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सब उसमें स्टालवर्ड्स है, तो उनके आगे मेरा और कुछ कहना ये मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ। पर धन्यवाद। और फिर एक बार पवन जी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो काम है वो ऐसे ही चलता रहे, और हमारा जो एक छोटा सा उनके लिए जो का एक सपोर्ट रहता है कि चीटी के जितना, वो भी हम लोग देते रहेंगे। धन्यवाद। राज जी थैंक यू वेरी मच। अब द रीजन, अब जो कमलेश जी ने जो बताया कि वी हैव टू टेक द ओल्ड नॉलेज, उसको थोड़ा रिडैक्ट करो जी। देयर आर सम थिंग्स दैट हैव टू बी चेंज्ड टू मेक इट कंटेम्पररी। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वैद्य वैष्णव जी इज हियर। वैष्णव जी की तरफ से ये है कि मेक इट इनटू अ इजी टू यूज सिस्टम। करेक्ट जैसे मोबाइल फोन में जो यस करेक्ट। अब हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में
विजय जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो वहाँ आ गया मोबाइल योगा एप्लीकेशन. So it is possible कि some of this knowledge can be put into easy to deliver system, mobile application करके. अब इसकी तरफ we will jointly discuss this thing, and क्योंकि कमलेश जी की जयपुर में NIA की तरफ से we will get some help. NIA has now become a university. क्यों कमलेश जी, National Institute of Ayurveda is now जी हाँ, deemed to be university हो गया है. हाँ जी, deemed to be university. इसके मतलब they have some more important role. और बिल्कुल निश्चित. बिल्कुल जी. और दिल्ली में सरता विहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद भी है. So I think collectively Pawan ji की तरफ we will look to Pawan ji's inspiration, guidance कि how to tackle this, to take the depth of knowledge in the samhitas, commentaries, और उसको कैसे codify करके थोड़ा easy to use and contemporary and future proof system, थोड़ा सा at least for the next 50 years, 100 years के लिए क्या हो सकता है. पवन जी के लिए मैं कुछ कह दूं एक बार पहले. स्वार्थ तो सिर्फ स्वार्थ है, परंतु परमार्थ महास्वार्थ है. तो पवन जी जो परमार्थ के लिए लगे हैं, मुझे लगता है कि ये पता नहीं ये जो वेबिनार चल रहे हैं इनको नित्य इतनी ऊर्जा मिल रही है कहाँ से, कि हमारे लिए प्रतिदिन चाहते हुए भी कई बार इसमें संयुक्त हो पाना बड़ा कठिन हो जाता है. लेकिन ये न केवल इनिशिएट कर रहे हैं, पूरे समय सबको जोड़ना है. ऐसी योजकता आप ये देखिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी इन्होंने जोड़ कर रखा हुआ है, जो क्या मैं समझता हूँ अपने बारे में. तो ये एक ऊर्जा, एक एनर्जी का स्रोत आजकल बन गए हैं, और इस कारण से ये जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, और जिम्मेदारी भी इन पर आ रही है कि जो जो ऐसे सुझाव अंत में कंक्लूजन के रूप में आते हैं, उस नाते से भी कहीं कुछ लोगों को जोड़ना करना है. मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये बात पवन जी के ध्यान में भी आ रही होगी. तो इस दिशा में हम और बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. आपका मार्गदर्शन बराबर रहता ही है, पवन जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे भी आप और इस विषय में इतनी रुचि और इतनी धैर्य के साथ और सीखने की ललक के साथ आप इसको कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो प्रेरणादायी है. धन्यवाद. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. कल एक बड़े क्रिटिकल सब्जेक्ट पे वेबिनार करने जा रहे हैं सर, आयुष में नीड ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. ओह वंडरफुल. और जो बुलाए हैं सभी किसी न किसी एसोसिएशन के हेड हैं, अलग अलग. तो ये सब यंग जनरेशन की हमको सुनने को मिलेगी कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअली इंटरनल डेमोक्रेसी के रूप में. मैं ये आशा करता हूँ. थैंक यू पवन जी. ये जगह कहाँ है जी? कडोली, कर्नाटक में सर. कर्नाटक. शाबाश जी. सो वंस अगेन वी आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री. पवन जी हमारी तरफ से आई जस्ट वांट टू सी if Reddy Saab is there just to share a few words, our senior colleague here. अगर Reddy Saab नहीं हो, I can see yes, Hema. Reddy Saab, namaskar. Reddy Saab, before you join us, I want to see if Hema ji, namaskar. Just if Hema ji has put her hand up here. Hema ji, namaskar. Please tell us a little bit about yourself. कहाँ से, where are you joining us? आज कहाँ से जोड़ रहे हो जी? Sir, I'm from Belgaum, sir. KLE Ayurveda College. KLE. Oh, you are. Thank you for joining us. Please tell us. Did you? Sir, I just heard through the presenters, but I couldn't join for the first presenter. Sir, all the presenters who presented, no, they have told what is given in Ayurveda text. Very true, very well said. Now, just a talk before, sir was telling that depending on place, the dinacharya has to be modified. So whatever acharyas have said, like Brahma Murta and waking up and other rest of things, so does all the points apply to the place, or it do differs with the place? And secondly, my another query is, so the research about all this Sadvritta Palana is being done or not, because any documentation has been done or not. Next is whether individual. Now, if I have to go, I have to give a dinacharya. Obviously, my patient belonging to in and around North Karnataka and their lifestyle, their pathya. Now, pathya, as sir said, it depends on individual area also. The dahi jo hai, it is
it is pathya in our place. Even we give in kids, we take in the night time. But in certain conditions, we say you, like for example, arthritis, आम वात, हम कहेंगे दही नहीं लेना है. Does that actually apply to our area too? Because our dahi is pathya for our people. So pathya also depends on various places. So as you said, you wanted to generalize, you want to like a mobile, whatever, if you want to generalize, it will be quite difficult because there are so many confining things. So how to go with this? Like, Hema, thank you so much for number one. Thank you so much for joining us from Belgavi. Our regards to your wonderful principal, Shettyji, who's deeply involved with our activities. So first of all, thanks to Belgavi for joining us. Number two, your questions are very important. The point you have said about Dehi, I'm going to put this question back to Rajanji in Mumbai. Rajanji, इसका थोड़ा कैसे करेंगे आप? Yes, yes. कर्नाटका वाला कहते हैं कि हमारी तरफ दही तो लेते हैं शाम को, रात को कुछ नहीं होता. और तो मेरा ऐसा कहना है कि उनका भी कहना सही है, पर कैसा है कि फिर भी वो, जैसा उन्होंने भी एक उसमें एक पॉइंट उसमें नोटिस किया था कि प्रकृति के हिसाब से भी वो जरूर डिफर करेगा. क्योंकि अगर कर्नाटका या कोई भी जगह पे अगर जैसा उन्होंने कहा कि कफ प्रकृति का आदमी है या कफ की कोई भी बीमारी है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या बाकी भी कोई, तो उसमें दही जो है वो अपथ्य ही है, वो सॉरी पथ्य है, वो नहीं लेना है. तो इसके लिए कि जैसा हमारा यहाँ का जो रीजन है बॉम्बे, और जो कि जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा ह्यूमिड है, वहाँ पे तो मैं सबको ही कहता हूँ, यहाँ के पेशेंट्स को, कि 1 चम्मच दही खाने के बजाय 1 लीटर छाछ पी लो. दैट इज मोर बेनिफिशियल. क्योंकि यहाँ के ह्यूमिड कंडीशन में वो 1000 टाइम्स तकलीफ देता ही है. पर फिर भी अगर ये आजन्म साथ में है, परसों भी एक बार इसके ऊपर एक थोड़ी सी चर्चा हो गई थी, तो आजन्म साथ में जो है वो दही जो है मैं सुबह लगाया हुआ दोपहर को खाने के लिए बोलता हूँ, नॉट इन द लेट इन द नाइट या इवनिंग के डिनर में वो नहीं लेना है. इसमें ले सकते हैं सुबह के टाइम में, लंच में ले सकते हैं. और उसमें भी थोड़ा सा अगर ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके और सेंधव नमक डाल करके वो खाया जाए, या जो मदन जी आपका फेवरेट जो शुंठी है वो अगर डाल के खाया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. और शुंठी और दही खाने से उसका थोड़ा सा फायदा अमवात में भी होता है, ऐसा मैंने देखा है. और उनका जो सेकंड ये था क्वेश्चन कि जरूर ये मोबाइल ऐप में ये चीज़ डालना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इतने सारे क्राइटेरिया हमको डालने पड़ेंगे, क्योंकि एज के हिसाब से, वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हिसाब से, बाद में जो ऋतु जो है, स्पेशली यूरोप में 3 ही ऋतु है. तो कि जैसे हमारे यहाँ पे 6 ऋतु भी बहुत ही कम जगह पे दिखते हैं, पर फिर भी यूरोप और जो भी क्लाइमेटिक के जहाँ पे ज़्यादा ठंड है वहाँ पे 3 ही ऋतु चलते हैं. तो उसमें भी वो मॉडिफाई करना और वो हिसाब से वो ऐप सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, पर हो भी सकता है जरूर. आजकल राजन जी, आजकल ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला AI वाला, इसकी हो सकता है कुछ? हाँ जरूर 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 हो सकता है, डेफिनेटली. आई वांट टू क्विकली राय साहब से थोड़ा, राय साहब आपकी तरफ से यूपी में क्या चलता है जी आपके? जी सर, पहले तो जो विषय आया है उस पर अपनी बात मैं रखूंगा कि ऋतुओं के अनुसार जो बात कही गई है, तो ऐसा नहीं जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो आप 2-2 महीने के हिसाब से ऋतुओं को बांट सकते हैं आसानी से. लेकिन जैसे वर्षा ऋतु की बात कर लें, बंगाल में, उड़ीसा में या जिधर मेघालय वगैरह जहाँ ज्यादा बरसात होती है, वहां पे ये वर्षा ऋतु 2 महीने की नहीं होगी. इसको हमें व्यवहारिकता में ले आना होगा. और जितने दिन तक वहां वर्षा ऋतु रहती है उतने दिन तक वर्षा ऋतु में वर्णित आचरण, आहार, व्यवहार का पालन करना, वो वहां के लिए वो वर्षा ऋतु में पालनीय विषय होंगे. उस ऋतु में जैसा आहार बताया गया वर्षा ऋतु में, जब तक वहां वर्षा होती है उसका पालन करना होगा. कहीं जो है
गर्मी बहुत दिनों तक होती है, 3-3 महीने 4-4 महीने तक होती है, ठंडक वहां नहीं होती है, तो वहां ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन उन 4 महीनों तक करना होगा। और जैसा दधी पे मार्गदर्शन आदरणीय राजन जी ने दिया है कि दधी में अगर विचार ना करना हो कि ये पथ्य है या अपथ्य है, तो तक्र बहुत ही उपयोगी चीज है। तक्र को तो अमृत के समान कह दिया है। और अगर कहीं अभिसंधि होने का खतरा है उसको, तो शुंठी का, सेंधव का प्रयोग करके उसका हम संस्कार कर सकते हैं। हाँ, रही बात तो प्रकृति की, आपकी प्रकृति क्या है? अगर आप कफज प्रकृति के हैं और लगता है कि विरुद्ध ऋतु में दधी हम लेने जा रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है सर। चलो जी, अगर थैंक यू राय जी। अब देखो राजस्थान की तरफ क्या चलता। कमलेश जी है हमारे साथ, फिर पूनम जी की तरफ से 1-2 शब्द जी। हाँ, कमलेश जी, देखिए इसको राजस्थान में दही की अपेक्षा तक्र का सेवन विशेष रूप से होता है, और ये सबको औक साथ में है, अभ्यास साथ में, रेगुलरली प्रैक्टिस में होने के कारण, आजन्म साथ में होने के कारण इसकी समस्याएं कम देखी जाती है। लेकिन देखो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, एक चूक हमसे क्या हो रही है, हम नए नक्तम दधि बुंजीत है केवल इस कोटेशन का इतना सा भाग ले रहे हैं, जबकि इस कोटेशन को पूरा देखेंगे तो उसमें दधि के संस्कार की पूरी बात आ जाती है। नए नक्तम दधि बुंजीत न चाप्यघृत शर्करम नामुद्गयूषम ना क्षोद्रम। तो जो जो संभावित विकार दही के अति सेवन से हो सकते हैं, उनका उपाय हाथ के हाथ उसी सूत्र में बताया हुआ है। तो कहीं मुद्गयूष हाथ में लेना है, कहीं क्षोद्र जो उसके अभिसंधि गुण को कम करता है, तो शहद उसके साथ मिलाकर लेने का उपदेश उन्होंने कहा है। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय देश हैं, ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा गर्मी भी, केवल कफज रोग ही नहीं, दधि उष्ण है, इस कारण से अगर साथ में मधु का भी प्रयोग किया जो स्वयं उष्ण है, तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति उष्ण क्षेत्र में, उष्ण काल में, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभ्यास साथ में के कारण, जैसा मार्ग विजय जी ने बताया, ऐसा तक्र का अभ्यास जहां जहां भी है, वहां जो तक्र के लाभ वो सबको मिल रहे हैं, और जो दधि के दोष हैं उनसे बचे हुए हैं। एक बात तो ये, एक विषय थोड़ा सा और आया अभी ऋतुओं के संबंध में, तो आप देखिए चरक के काल के लगभग 800 साल बाद चरक ने जब केवल ऋतुओं का द्विमासिक विभाजन कर दिया, उन्होंने कहा मधुमाद वो वसंत है, ये 2 महीनों की ऋतु बनेगी। वाग्भट उससे एक कदम आगे गए और उन्होंने जाकर ये कहा कि जिस समय प्रकृति में इस प्रकार के लक्षण पैदा हो, तब उस ऋतु को समझना चाहिए। तो एक तरह से इसको उन्होंने ग्लोबलाइज कर दिया कि संसार भर के किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार के प्रकृति में होने वाले लक्षण दिखाई दें, उस समय उस क्षेत्र विशेष में इस ऋतु को मानना चाहिए। तो एक आगे दी, आज के संदर्भ में अब अगर ऋतु का निर्धारण करें, तो वायु की दिशा, वायु की गति, वहां का तापमान और वहां का आर्द्रता का लेवल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर, हवा की गति और दिशा, इनके आधार पर भी हम शायद ऋतु का निर्धारण कुछ आंशिक रूप से कर सकते हैं। तो कितने समय में ये सब चीजों को एक बार मौसम विभाग से टाई अप करके पिछले 50 वर्ष का उनका जो डाटा उनके पास सुरक्षित रहता है, तो प्रत्येक समय में किस किस समय जो दिशा, ऋतु विशेष में हवा की दिशा और गति का उल्लेख शास्त्र में मिलता है। तो किस काल में कितने समय तक किस दिशा से वायु की गति हो रही है, इसका डाटा मौसम विभाग के पास उपलब्ध हो सकता है। तो इन 4 बातों के आधार पर हवा की दिशा, हवा की गति, आर्द्रता और तापमान, इन चारों बातों को लेकर के हम एक डाटा शीट बना करके ये आकलन कर सकते हैं कि किस किस समय किस किस देश क्षेत्र विशेष में कौन कौन सी ऋतु कितने समय के लिए रहती है। इतना निवेदन मुझे करना था। बढ़िया, कमलेश जी, you have clarified many points. You have taken the discussion to contemporary sciences data, ये database में है थोड़ा, and we can integrate that. I want to take Raiji. I'll come back to you. I just want to invite Sudhakar ji. Sudhakar ji, namaskaram. Sir, namaskaram. Namaskaram. Thank you for joining us Good evening today. to all. Respected Madan sir, Sharma sir, Kamlesh sir, and Agnihotri sir, and all stalwarts of the Ayurveda. And I would like to quickly agree with our Sharma sir regarding Rutu. Even Susita has mentioned, full day is divided into Rutus. The morning, it is a Vasant Rutu. Like afternoon, it's a Grishma Rutu. So he has given clear-cut idea. So in day also, we can feel that the changes in the environment factors, based on that,
the Rucharya can be followed. That's why in the morning breakfast, when you are taking Lagu Ahara, because it is a Kafakala. So that's Vasant Rutu. So Vasant Rutu, cheni opposite rasas we are taking, and we are taking Lagu Ahara also. So there, the Dina Linga Krut, he has mentioned the word that Dina Linga Krut. So total 24 hours can be viewed as a 6 Rutus and can be followed. If we follow that one, definitely we will maintain the health also. And one more, sir, while telling the Dantadhavana Kasta Rasa, Aveksha Rutu, that means depending upon the Rutu, depending upon the Prakriti, depending upon the other things also, we should select the Dantadhavana Kasta. That means the Dinacharya, which are mentioned in Ayurveda, can be modified according to Rutu. That is important, because he has mentioned that daily we are taking only one toothpaste, which is having Madarasa, but if Vasant Rutu, Kapha Prakopa will be there. That's why he has mentioned Aveksha Rutu. So according to Rutu, according to Prakriti, according to Desha, you can change the toothpaste also. So that is a very, very beautiful idea given by Charakacharya. That means the Dinacharya is maybe all the contents are same, but the applicability depends upon the Prakriti, depends upon the Dosha, depends upon the Rutu. That's what I want to say. And regarding today's webinar, so it is actually need of our, because wherever you see, and one more, I would like to say that Ashtanga started with quotation Ragadi Rogan. So that means all the rogas, the karana is only raga, dvesha, and etc. That's the psychological disorders. So that's to prevent psychological disorders, to maintain, to manage the psychological disorders, and the Sadvritta is very, very important. That's why Acharya Vagbhata Ragadi Rogan, when he says, that is basically Sadvritta is very, very important to promote the health of the person as well as to prevent the disorders. And secondly, only they mean the communicable disease, but first only psychological disorders. That's what I want to say. And one more thing, sir, Sadvritta, when we follow, there we have like a psychoneuroimmunity in our body. Psychoneuroimmunity axis. That psychoneuroimmunity axis will be promoted, stimulated, so that the person behavioral changes will be there definitely. And there are some research also says that in COVID-19 pandemic, somebody is conducted a study, behavioral changes, like following the Sadvrittas, that people, they are compared to other people, the what we can call risk factors or other side effects will be lessened. So that indicates that Sadvritta plays a major role in prevention of communicable and non-communicable disease, both, sir. That's what I want to say. And today, the sessions were very nicely started by our Guruji Sharma sir and Agnihotri sir and other Gurubasavaraj, the young Swasthavritta chap from the SDM Ayurveda College, HASSAN. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity for sharing my few words. Thank you very much, sir. Sudagarji, thank you for clarifying many, many points. Because people are confused a little bit, and that confusion is has to be clarified, especially the modern biology ki taraf. People are a little confused. I hope, Hema, I hope we have covered some, we have learned the views from all the senior people here. Hema, thank you for. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. I hope we have satisfied some of your doubts, and how our senior scholars are unpacking that problem. You asked a very important question, starting with Dehi, and how the senior colleagues are unpacking this problem. Yes, thank you. Thank you, Sudagarji. Thank you so much for touching on that other point about 6 ritus in the day, and how to see the day itself as a way to manage based on ritu principles, that within a day you can see the different ritus. I want to rise up before I come back to you. Hamare saath hai ji Poonam ji. Poonam ji, namaskar. I want to see if we can get some comments. Thank. Dr. Sunita is there. Sunita ji, namaskar. Sunita ji, namaskar. हाँ सर. Sunita ji. Sunita ji is finding it difficult. Sunita ji, शायद unmute कैसे करें Sunita ji को? Sunita ji, नमस्कार. आ गया जी आपका. नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रहे हो जी आज सुनीता जी? उत्तराखंड से. गुड इवनिंग वन एंड ऑल सर. सभी गुरु जी को प्रणाम मेरा.
और मैं पटना से बोल रही हूँ। अच्छा शबाश, I hope. Yes. Namaskar ji, welcome to the group. Thank We you, want- sir. Thank you very much. I hope it was a satisfactory event and hope we could. Very much satisfactory, sir. मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे गुरुजनों से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ है वेबिनार में और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी आई एम फॉन्ड ऑफ सद्वृत्त एंड स्वस्वृत्ता, आई लव इट। तो मैं तो बहुत सारी चीजें एक्चुअली, जैसे आचार रसायन की बात हुई सर, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें दी हैं। मैं अभी ऐसा प्लान कर रही हूँ कि उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जानते हैं और एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, कुछ भी अनप्रैक्टिकल नहीं है। हमारे सद्वृत्त एंड स्वस्वृत्त में जो भी डिस्क्राइब्ड है हर चीज प्रैक्टिकल है। तो मैं कभी प्लान कर रही हूँ कि जो आचार रसायन है उसमें से कुछ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, सिर्फ 5-6 पॉइंट्स लेके मैं थोड़ा अवेयरनेस करूँ लोगों में। तो एक मेरी ऐसी प्लानिंग चल रही है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं बहुत चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ करूँ, कुछ ही पॉइंट्स लोगों को इजी लगे, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें बता दो तो लोगों को थोड़ा टफ लगता है कि कैसे हम मैनेज करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स लेके अवेयरनेस करने का है मेरा, और बहुत अच्छा लगा। ये जो आपने जो बताया कि आम आदमी की तरफ कैसे ले जाए, दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड नॉलेज जो संहिताओं टिकाओं में है, नॉलेज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप। मगर आम आदमी के लिए क्या देंगे आप, अगर आपसे पूछें? जैसे सपोज 5 पॉइंट्स मैंने ले लिया। हाँ जी। वैसे तो फर्स्ट टाइम किसी भी हम चूंकि आयुर्वेद से रिलेटेड है, आई नो वेरी वेल व्हाट इज स्वस्वृत्त एंड व्हाट इज सद्वृत्त। सत्य हमारे यहाँ जो दो स्टार्टिंग का, जैसे सच बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, आम पब्लिक की लैंग्वेज में उनको 2-4 पॉइंट्स मैं समझा दूं। मैं ऐसा सोचती हूँ, उनको लगेगा अरे सच बोलने से क्या हो जाएगा, लेकिन उनको मैं सोचती हूँ कि उनको 1 मंथ का टाइम दूं। सिर्फ आप 1 मंथ ऐसा करो, उसके बाद देखो कैसा लगता है, और ये बहुत रिजल्टेंट हो, मतलब उनको अच्छा लगेगा, फ्रूटफुल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। सुनीता जी, एक पॉइंट और आपके, जस्ट फॉर सम फीडबैक, यहाँ पे जी ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। ओबेसिटी के कारण एक तो आहार, इंडस्ट्रियल फूड करके, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, उसमें जो फैट जो होती है, इंडस्ट्रियल फैट वगैरह वगैरह, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। दूसरी चीज इनएक्टिविटी। अब बच्चे यहाँ आजकल क्या हो रहा है यहाँ यूरोप में कि स्कूल 1 वीक इन स्कूल, 1 वीक एट होम, घर में बैठ के इंटरनेट पे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इनएक्टिविटी, बहुत ज्यादा हो गया। अब इसकी, अब हिंदुस्तान में भी आएगा, ये फास्ट फूड आ गया हिंदुस्तान में। हमारी शायद 2 हफ्ते पहले वी हैड पिज्जा की तरफ, वी आर सेइंग नो फास्ट फूड करके। ये इज इट प्रैक्टिकल इन हिंदुस्तान? दिस इज अ क्वेश्चन। इतनी प्रेशर आती है फ्रॉम द इंडस्ट्री कि ये खाओ, ये खाओ, ये पियो, ये खाओ। इज इट पॉसिबल टू withstand that pressure? कि what is the strategy? एक तरफ तो है such amazing knowledge हमारी संहिताओं में that we have, और दूसरी तरफ से इतनी प्रेशर आती है एडवर्टीजमेंट। यहाँ आयरलैंड में, I'll give you one example before you give us an answer for this. आयरलैंड में 50% of school children are obese. 50%, half the children are obese. अब the government made a formulation कि स्कूल की आसपास, I think 1/2 kilometer स्कूल की आसपास, there will be no fast food stores, क्योंकि बच्चे in between, you know, स्कूल में इंटरवल में they go and get something. अब ये किया कि within a certain distance. I don't know if these are good issues, it can be implemented, मगर will it be possible in Hindustan? This is my question. Yes sir, ये तो सर जो आपने कहा, मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि स्कूल के पास जंक फूड बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बट आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल सर, क्योंकि मास लेवल पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं पर्सनली, क्योंकि अगर हम सभी मिल जाएं, पूरा आयुर्वेदिक कम्युनिटी मिल जाए, तो शायद गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है सर।
हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा बहुत अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन मास लेवल पे तो सर विदाउट गवर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल आई थिंक. This is the Sunita ji, this is the reason why I said कि अब तक तो हो गया स्वच्छ भारत और उसके बाद आ गया आत्मनिर्भर भारत, इसकी थोड़ा और आगे ले सकते कि नहीं कि स्वस्थ. I agree with your Swasth Bharat. I agree. You agree completely. चलो जी, thank you. आप which place are you in Patna ji? आप you are कौन से कॉलेज? Patna Government Ayurvedic College. I am associate professor there. Achha ji, I am so happy you have joined us. I hope you will stay with us whenever you find time. Please join us in our events. Pawan ji will keep you informed about these things. Madan sir, sorry to interrupt you. I just want to add that Dr. Sunita Pandey is graduate BMS from Lucknow State College, Lucknow, UP, and postgraduate of Swathvritta and Yoga from BHU batch 2000. So, yes, yeah, this is one thing I want to add. Yes. Thank you. So Yes, you sir. see, very important. We are so proud of Agnihotri ji and the connection with BHU and all the wonderful things he is promoting for best students in BHU and many of these activities. We are proud. We are proud of BHU, and we feel BHU needs global exposure. Thoda aur hona chahiye. We get very few speakers. We have only Dr. Vyadgi that came. Only one person from BHU, Agnihotri ji, of course, is here. I want to bring the comment to Vijay ji, Rai ji, but before I do that, I can see raised hand from Rajan ji. Rajan ji, namaskar ji. नमस्कार नमस्कार. ऐसा है कि जैसा अभी आपने डिस्कशन किया कि पिज्जा के बारे में, तो वो तो हम इतना मास लेवल पे सब जैसा एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये होता है, तो मैं उसमें से एक थोड़ा सा सोच अलग ये बोलता हूँ बच्चों को कि वही जो चीज आप बाहर खाते हैं तो वो घर में खाए, घर में बना करके खाए. एंड आई यूज्ड टू गिव देम एग्जांपल कि बाहर जो फॉर एग्जांपल कि कोई भी आउटलेट पे जो पिज्जा खाते हैं उसको 400 to 450 रुपीज लगते हैं, तो उतने ही कॉस्ट में घर में बनाया हुआ अगर पिज्जा कि जिसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है वो हम लोग अगर खाएंगे तो पूरे घर के लिए वो सही रहता है. तो इसके लिए ये एक पथ्य में मैं एक चीजें बताता हूँ कि बाहर पानी पूरी नहीं खाना है या बाकी जो फास्ट फूड है नहीं खाना है. यस, वंस इन अ वाइल, एक महीने में एक आध बार घर पे खा लो बाहर के खाने से बजाय, और कॉस्ट भी इफेक्ट हो जाता है और घर में का खाने का जो आनंद है वो भी अच्छी तरह से मिल सकता है. Rajdev, thank you. Before I come to Rise ji, I want to see if we can take some comments from Gurubasavaraj ji in HASSAN. Gurubasavaraj ji, namaskar. Namaste, sir. Namaste. Namaste. Gurubasavaraj ji, your presentation was wonderful. Thank you, sir. Hema ji has touched on some points, and she has highlighted some questions, some concerns, how to modulate. If you go to Dakshin Karnataka, you have one kind of season. When you come to North Karnataka towards Maharashtra, you have another kind of climatic condition. Isko kaise accommodate kare aur isko aage kaise le chale. And the other point is, you are from Karnataka, all you people, and you come from the land of IT. Bangalore is the IT hub for the world. Where can we apply thoda sa wo soch, IT walon ki thoda soch iski taraf? Rajan ji says it might be difficult to implement this using mobile apps. Is there some future in this? So, and then yes, I will leave it to Rai Saab just to conclude our event, and then pass it on to Pawan ji to take care of the rest. So thank you. Thank you, Gurubasavaraj ji, for staying with us till the end. It looks like we have kept your attention high over there. Thank you. Thank you. Would you have some last comments about some of those issues of how to modulate? Yes, sir. Yes, sir. The thing is that, sir, what is the missing link in the teaching institutes across India is
like we are not taking up the researchers which are multicentric. For example, we have the Swasthavritta Postgraduate Center in around 9 to 10 institutes of Karnataka. Likewise, if I want to just highlight about the Rutucharya concept, can we take, we have to think like such many webinars, such many discussions will merely end in discussion, but nothing comes into the practice. That is the irony. For this, what I can, being an youngest of this August gathering, what I can request is, please raise such research topics which are happening at a time in all the states of India. For example, Rutu. Right now, I am at the verge of completion of my PhD studies of Rutu Haritaki in Vasanta Rutu. I found it very difficult that how to assess when Vasanta Rutu arrives really in real sense. Rutulinga, Rutulakshanas are seen in our vicinity of the area. Then, as rightly told by one of the speaker, that I collected from meteorology department the temperature, the wind, as Kamlesh sir told. Even now, I am finding it difficult to judge about the arrival of Vasanta Rutu. So such topics like Rutucharya, Dinacharya, such topics should be made common in our Swasthavritta speciality, and the same topic is to be continued. Like for my postgraduate in research, I took Amrita Prashakrita and HIV positive cases. There had been a very good result. Later on, nobody continued it. Only I am writing Amrita Prashakrita, and luckily my clients, even after my 10 to 12 years of submission, I am still writing Amrita Prashakrita for my HIV positive cases. But if the studies which are very helpful, if they are taken by many PG centers across India, and such studies will go on with a good sample size, I think that one such thing should be Rutucharya. Like pick up one Rutu, conduct the same Rutucharya various studies, literary review, or observational studies, or Rutu Haritaki, or Rutu Shodhanas, many aspects of the same Rutu in all the centers across India. Maybe such studies would come out with a good ideas, I think, sir. We can add on the results of that. Thank you. Raji, thank you for catching a very important point. And this is what Pawanji is hoping that we can put together, research programs, research initiatives that look at all these aspects, because what is in the Samhitas, I feel, is a pointer. कि इस तरफ देखो, ये भी सोचो, इसके बारे में भी सोचो. It is not giving us that prescription. It is saying, be aware of this. Most times, yes, there are special formulations, etc. So thank you so much for highlighting this very important point that Kamlesh ji touched on, and the question is your question is so important. Iski taraf thoda lagaye research. We have big institutes in Delhi like the National Institute of Immunology. आपके कर्नाटका में बेंगलुरु में है Indian Institute of Science, very prestigious place. We will see how to engage with them and how to bring these questions out and the importance of this question. The other point is about gut health, GI tract health that I showed. आप लोग कहते हैं कि कोष्ठ शुद्धि, and what is this concept? There is so much emphasis placed on the koshta, and everything hinges on the koshta. From the koshta, the autonomic nervous system controls so many things. Ab iski taraf, we must do the research on these things. How does it change with the ritus? How can we use some measurement, some other measurement to understand ritu? Meri man mein, in reply to your question, you might have seen in some of my earlier presentations, how some of the gene activity changes across the months. And we can use that as an indicator sometimes. There is something the body is sensing, and we might be able to use that. And then we don't have to look at the DNA. We can have some surrogate measurement, physiology. Some other measurement is there. There is a Gurubasavaraj ji who was here in one of our Innovation Day. You may know him. He has developed one instrument for measuring meridian energy. You can quickly measure the activity. He uses the Chinese logic of 12 meridians in the body. This is just like prana flowing through the body. And can we use some
slightly a different thinking to do these quick measurements. As the seasons change, the flow of prana changes. And this is, the understanding is there in the Ayurveda text, in the yoga text, but we have to come together. So I take your point. I'm happy you accepted to answer my question, and you gave us something very, very important here to conclude this event. We will take this up. It is being recorded. It is being it will be archived. So we will revisit the recording and understand your contribution better and act on it. So thank you. My regards once again to everybody in HASSAN, and thank you for staying with us. Namaskar. I take the last word from Rai Saab in Kashi. Rai Saab, namaskar ji. आपकी तरफ से थोड़ा सा, फिर पवन जी will take over. जी जी. Thank you, sir. Just I want 2 or 3 points. पहले तो सर अभी डॉक्टर गुरुबसवराज सर ने बात रखी है रिसर्च की, तो देखिए जो चीजें अपने यहाँ बताई गई हैं वो टाइम टेस्टेड है. हम उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और अपने घर से नहीं शुरू कर रहे हैं. मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं सर. ओट, जिसको हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जई कहते हैं, घोड़ जई. मुझे अपने होशो हवास में याद है, मेरे यहाँ जब बैल हुआ करते थे, बीमार हो जाते थे, तो उसकी खिचड़ी या उसकी खीर जैसी प्रिपरेशन गुड़ के साथ बना के दी जाती थी. वो बैल खड़ा हो जाता था. हमने उसको तिरस्कृत किया, उस जई को अपने अनाज से बाहर कर दिया, लेकिन वही जई जब ओट मील के रूप में आ जाती है, हम उसको हाथों हाथ लेते हैं. हम अपनी परंपराओं का, अपने स्वस्थ परक जो चीजें बताई गई हैं उनका अनादर करते हैं, और जब दूसरे लोग अपना लेते हैं तो हम हाय हाय करते हैं. दूसरी बात, रिसर्च की जो बात है, पीजी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे रिसर्च होती हैं, और ये रिसर्च जस्ट टू क्लियर द एमडी. हम उन चीजों को पब्लिक डोमेन में नहीं ले आते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करें जन स्वास्थ्य के लिए, इस पे कार्य नहीं करते हैं. ये टीचरों की भी, जो उनके गाइड होते हैं, उनकी भी एक समस्या है कि उनके साथ, उनके पास कई बच्चे होते हैं, जल्दी से उनको 3 साल में सबमिट करके जाना होता है. तो इन कुछ विषयों पे इनिशिएटिव लेना होगा. दूसरा, जो आप स्वस्थ भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो हम लोग एक संगठन से जुड़े हैं. अभी आदरणीय चौधरी सर भी जुड़े थे, लेकिन वो लग रहा है लेफ्ट कर गए. अच्छा. तो इस संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने कई बार इस तरीके से प्रयास किया है, और अपने आयुष मंत्रालय, क्योंकि वो, और जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रुझान है आयुर्वेद के प्रति, जैसे एक प्रधानमंत्री कहता हो कि आप गर्म पानी पीजिए कोविड काल में, तो ये बहुत बड़ी बात है, और लोगों ने पीना शुरू किया है. और छोटी छोटी ऐसी कुछ चीजें आयुष मंत्रालय बीच बीच में ले आता रहा पूरे कोविड काल में, पहले वाले में भी, इस बार में भी, और वो प्रचलन में आई हैं. तो समय तो हमारे अनुकूल है, हमको उनको देना है, उनको बताना है कि ये चीजें इसमें लाभ करती हैं, ये इसके प्रमाण हैं. तो मैं तो कहूंगा आपका मंच आदरणीय पवन सर, आप एक जो बीड़ा उठाए हुए हैं, हम लोगों का तो इसमें गिलहरी सहयोग बस है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, और आगे भी हम लोगों का जो भी सहयोग इसमें होगा, आप जैसा ही निर्देश करेंगे हम लोग सहयोग करेंगे. मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही निवेदन था. धन्यवाद. नमस्कार जी, नमस्कार. थैंक यू सो मच. अगर पवन जी हमारे साथ हो, आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स टू पवन जी कि आज 5 जगह से, अलग अलग हिंदुस्तान की अलग अलग जगह से, we have brought some wonderful people here from south, from Karnataka, from the north, from Jammu, from Rajasthan, from Uttar Pradesh. So very, very wonderful collection of people. And I am, ये देखो राय साहब, हम बैठे इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में, और आप बैठे काशी में. अब देखो इतनी आसानी से बात चल रहा जी. We couldn't even think about this. और अग्निहोत्री जी बैठा उत्तराखंड में, और राजन जी बैठा मुंबई में, और ये देखो, we are discussing with such clarity
And such important points are coming out, and the discussion is so vibrant. So for all of that, we want to thank technology. This is the future. अब इसके साथ इसके अंदर ले आने हैं बच्चों को. अब I'm happy Vaishna has joined from Kerala, from Kottakkal College. We need more people like this, and I am confident that with young professors who are joining us, we will see this movement picking up, and we will see more of this activity. So thank you everybody for the rich contributions, both very clear points जो आपने उठाया. मेरी तरफ से एक ही निवेदन है कि ये हमारी प्राइम मिनिस्टर की, आप तो है प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से, वाराणसी से, कि कम से कम वहाँ तो हो गया अब काशी विश्वनाथ की टेम्पल की वो जो थोड़ा सा, उसी तरह काशी की आसपास या वाराणसी के आसपास या यूपी की अंदर थोड़ा और करें. आपकी वहाँ तो इलेक्शंस चल रहा, देखो. Very confident that we will get the expected results. और the 90s, अब look at this number. यूपी के आपके स्टेट की population is half the population of पूरा यूरोप का. ये है, you are not a state. You will be the 7th largest country in the world. This is the challenge we have. 95 districts, 97,000 villages. अब थोड़ा कैलकुलेट करके देखो जी, अगर हर एक 10 गांव के अंदर, हर एक 10 गांव के लिए एक छोटा सा ग्राम वाइद्य बनाना हो, देखो कितने साल लगेगा. This is a challenge we have. तो इसकी तरफ देखें, थोड़ा सोच लगाएं. इसीलिए this is why I am saying थोड़ा वो flow बनानी है. This is what I am saying. थोड़ा सा चर्चा से थोड़ा सा flow बनाए कि we have to keep this flow going, or slowly it will happen. Thank you to everybody. अगर पवन जी हमारे साथ हो, पवन जी नमस्कार. अगर पवन जी नहीं हो, then I am taking Pavanji's responsibility for doing our formal closing. I request Agnihotri ji, he is our formal closing of ceremony, but today he was also a presenter. Agnihotri ji, हमारी तरफ से request, please close our day today. Namaskar. Thank you, Pawan Madan sir ji, and my regards to all the very, very senior dignitaries and all the participants, including me. Actually, Dr. Pawan Sharma did an experiment today. What he did, he put Gavaskar and K. Krishmachari Shrikant to open with today's webinar. And the result happened that persons like Dr. Vijay Kr Ray had to say that I am simply pickles. You are not a pickle. You and Gurubasavaraj, you are the Sachin Sehwag team. You are the Sachin Sehwag team. If we had been Gavaskar and we and Kamlesh ji, Gavaskar and Krishmachari Shrikant, you all Sachin and Sehwag team, including Mitali Raj like Dr. Poonam Yadav. Everybody is not relevant, and for me, I had been right from opener to tail ender. So I have to make all the formalities. So many mentors came, like our Rajan Patankar ji, our Professor Sudhakar Reddy ji, so many mentors, ex-captains, and all the there. So many things are there. Wonderful. What Kamlesh Vedji made the outline of today's webinar, along with his inputs, we all tried to travel within that framework, and wonderfully, Delhi, I used to say that, well, every person, every knowledgeable person, every senior person put lot of knowledge, they are all the ocean of knowledge. But what today I found, you are all the ocean of questions. What happened? Each and every person, either he is teaching or doing research work,
they are coming in such a manner that really, if it is not, then it is of no use. Mr. Sunil Gavaskar used to say that I am sitting at top with a 10,000 runs and nobody is coming me. So was the case with me. In way back in 1983, I was having nobody to see, to discuss, to share with. Now what should be done in Swasthavritta subject? We start with my was simply pure academic along with its description in the text. As I told that Kamlesh ji made all the framework outlines to proceed one. And what our third speaker, Gurubasavaraj ji, he made all the things practically possible in the department of Swasthavritta. And what Vijay ji told repeatedly, he paid full respect and regards for us, and we are so thankful. They should stay blessed. He put forward that a person who is supposed to be the Sadvritta observer or Sadvritta Palak should be a truthful person, Satya person. And in our text at places, our acharyas talked about this, that who is supposed to be that person. When we are talking about the surgeon or the Shrestha Chikitsak, it is said that ye tu Swasthavritta daksha suchiya karma kovida jit hasta jitatmana tebhya nityam katam nama. So suchiya is there, Shastra is there, Piyush Pani is there, Daksh is there. And what about the visibility scan to whom I should follow? He is the apt person. And for that it is said that Rajastamobhyam nirmukta. This is very big condition. Rajastamobhyam nirmukta. Tapo Gyan Balene, who has did a lot of academic work in a form of tapo, then only he, whatever he is speaking will become the truth and it should be followed like anything. Now, the persons like this Hema put forward one question that whether anybody followed Sadvritta, it is not documented at all. It's not better. Your own life is itself a documentation. If you followed Sadvritta, start from yourself. If you followed Sadvritta, if you followed Swasthavritta, definitely it is itself a documentation. And the fact is, for following the Sadvritta, as I highlighted, Dincharya Palan, Richarya Palan is very important. And the fact is that Dincharya, Richarya is itself a so big chapter, it is needing so many webinars for that. Dincharya, every step, if it is done properly at proper time by proper things which are narrated there, one will hail the good health. So it will fall under the heading of Sadvritta. And as far as the Richarya is concerned, so many questions are there. Our Kamlesh ji cleared there, our Rajan Patenkar ji cleared there, but what is that? What about curd and everything? Actually, above Satpura Pahad, it is North India, and here the happening of ritus are different. And below the Satpura Pahad, there is also one more because of the continuation of raining, that is known as Pravat Ritu. So, Acharya Shushru talked about Pravat Ritu, whereas our Acharya Charak is not of that. So it falls almost 4 months together, including our coastal areas, Andhra, Karnataka, Odisha, Kerala, and all that. So definitely every step is written rightly in the text, but what has to be followed? Either it is Abhyas Satma, Ok Satma, Ajanm Satma. Since these things are different, so the answer is also different. So neither this Hemaji nor our Sunita Pandey, they are making a good modules. They are trying to make a good modules and experimentation. It's wonderful. They should come forward. All the suspect teachers, those who are nowadays attached with the research with their students, should come forward, and they will definitely put a good output to society with its implemented form. It is not a matter to be put in the text. Dincharya, Richarya, Sandhacharya, Racharya, Tevupaspalam, Beg Vidharan, and Sadvritta. These are the vital parts of every living being. It should be followed by each and every person, and it comes our responsibility of our teachers or the responsibilities of our Ayurvedic doctors. They should come forward. Even every physician, every medical officer is supposed to give some instruction to the patient he is facing in the hospitals, in the PSCs, in the Ayurvedic SADs.
you follow the pathya, you follow this thing, at what time you have to sleep, how much you have to sleep. If the patient is patient, the attendant of the patient who is healthy, he should also be given the instruction for the awareness of the right thing which is there in that text. So the practical aspect, if it will be followed, we will be really reaching to the best quality society, following the text and protocols of Swasthvrita. This is our very submission. Thank you. Thank you so much. Thank you. Over to Pawan Sharma ji. Pawan Sharma ji. Yes, I would like to communicate one thing, sir. I am really overwhelmed, and this is a cricket match because Agnihotri ji is quoting again and again top players' name. I am not in that category, but this is a unique cricket game, sir, where two umpires, all 22 players are supporting batsmen. They are not there to take catch. They are not claiming for out. No out. No. Everybody is centurion. Everybody, and you are 3 centurion. No. Pawan ji is Kapil Dev. 434. आप लोगों के बिना ये संभव ही नहीं है सर. आप लोग जो इसकी शोभा है, इनके बिना कहीं संभव है? नहीं. आप लोगों के बिना ये संभव ही नहीं. मैं सभी का दिल से आभार मानता हूँ. मदन सर का, अग्निहोत्री सर का, पटनकर सर का, जगदीश्वर जी का, सभी का, सुधाकर रेड्डी जी का. आप लोग जो यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये यात्रा तो वहीं रुक जाएगी. रास्ते चलते गए, कारवां बनता गया. और मेरे पास भी स्पीकर्स के नाम बहुत आते हैं, 7-8 नाम आते हैं. मैं 7-8 जगह फोन करता हूँ, कहीं कोई विघ्न बाधा आ जाती है. तो अब तो मैंने पहले हर्ट होता था कि शायद उसने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब बड़ा अच्छा लगने लगा. जो आ गया सो अपना है, और जो नहीं आया सो सपना था. जो आ गया सो अपना है, जो नहीं आया वो सपना है. Thank you, sir. Pawan ji, thank you very much. So, particularly grateful for Ray Saab from Kashi for joining us today, and all our other contributors, both in the formal presentations and during the discussions. We look forward to Pawan ji's next event. Pawan ji, if you want to just put that कल की प्रोग्राम आपने बताया क्या है, if you need of internal democracy. This is a very important, very important theme. We talked about unity, and you have people from Jaipur, Delhi, Hardwar, Alwar, Gwalior, or Karnataka. All of them are, sir, any association head. Bilkul. Very unique thing. I hope, Pawanji, that we can have a vibrant discussion at the end of this, because this is bringing people together. आज देखो जम्मू से लाया आपने, कमलेश जी है ही है हमारे साथ राजस्थान से, और आप लाए राय साहब को काशी से. So, and young people like Vaishna here from Kerala, the future generation, and who are so deeply committed to Ayurveda, so deeply committed. Yes, I can see with their energy, this will run for another 5 decades after our time, and they will connect with other people who will take it on and take it forward. So, Pawanji, you